Okay, so welcome to the technical interview preparation session, all of you. My name is Prince, and I will be guiding you throughout the technical interview sessions. Here, basically, we'll be discussing on the troubleshooting, some of the technical concepts, and some of the common problems appear happening in the corporates, like in the desktop, hardware, software, and troubleshooting. What are the troubleshooting steps for those all the problems we'll discuss. Yeah. So since today is the day one, today we'll be discussing on the some fundamentals of the computer, like the hardware components, internal parts of the computer, and the CPU. So today, tomorrow, and maybe day after tomorrow, we'll be discussing on some of the fundamental concepts only. But then afterwards, like from the better, maybe from the Thursday onwards, we'll be starting the troubleshootings. Okay. All right. Okay. Yeah. So just to clarify all of you, this technical interview preparation is the hardware and software troubleshooting. Okay, I think you will be assigned 2 to 3 technical interview preparation, maybe like one will be of Windows Server, one will be of ITIL, and this one is of hardware and software troubleshooting. So don't get confused between all those three technical interview preparation. Okay, this one is the hardware and software troubleshooting. Maybe the other one will be the Windows Server or the ITIL. Then. Okay, yeah. So we are currently going through interview Who, sir? preparation now. Sorry. But actually, we have a class scheduled for CCNA interview preparation on in morning, and this one is for troubleshooting. Hmm. CCN is your module. CCN is like what? It is not the technical interview preparation. CCNA to like you will understand the routing and switching concept over there. Okay. Like means this technical interview preparation session is conducted just to understand what kind of questions can be asked in the technical interviews. Okay. That is what. Okay, sir. Yeah. Yes, Yeah. sir. So you will teach about routing also, CCNA No, also. no. Routing. That won't be covered. No, about CCNA. So you are going to teach us about CCNA also. Okay? CCNA, yeah, I do take the CCNA classes, but this session is not the CCNA session. This is for only software and hardware troubleshooting. Yeah, troubleshooting. This one is the troubleshooting class. Okay. I take CCNA classes, but yeah, right now this session is technical interview preparation. Okay. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Okay, sir. All right. Just a moment, everyone. आपका नया बैच स्टार्ट हुआ किसी दिन का? Sorry. आपका सीजन का नया बैच शुरू हुआ क्या? CCNA का न्यू बैच आज स्टार्ट हुआ है ना? सर कितने बजे आपका क्लास है? सुबह 9 बजे होता है CCNA का. ओके सर, क्योंकि Yeah. मेरा 10 बजे और एक क्लास है 9 बजे से 10 बजे तक. एडमिन को बोलूंगा करने के लिए, दिक्कत होगा 10 बजे. ओके नहीं है. मेरा शाम एक को सेशन होता है. हम्म. कितना बजे? मेरा जो सेशन होता है CCNA का वो 9 AM होता है. ठीक है, सुबह में. ओके सर. हाँ. ओके, ठीक है. देखिए, कंप्यूटर का कुछ फंडामेंटल के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. आई थिंक ये आप लोगों को पता होगा, है ना, थोड़े मोड़े पार्ट्स या अच्छा वेट. आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड हिंदी. ऑल ऑफ यू हियर, एवरीवन Yes, अंडरस्टैंड sir. हिंदी. Yes, sir. Yes, sir. No Okay. problem in No. understanding English. Okay. No problem. I think some of the people are from the English. I think South side also, na? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Okay. But No there are problem. We'll few continue. No problem. We'll continue in English only. Okay. Yeah. And if suppose anyone is not getting any concept, you can tell me. I will repeat it in Hindi. ठीक है. जिनको भी concept नहीं समझ में आएगा तो आप बोलिएगा तो मैं हिंदी में थोड़ा repeat कर दूंगा. ठीक है. हाँ. Okay, All sir. right. Okay. Yeah. See you. Parts of computer we all know, right? है ना? What are the like means if we are talking about a PC setup, right? So in a PC setup, what are the major parts, major components? That is all we know, like monitor, right? First monitor, yes, sir. right? है ना? This one is the monitor display screen. Then CPU cabinet. CPU cabinet is there.
Actually, there is like some of the people, sometimes people they get confused between the cabinet and the CPU, right? We say it as a CPU, है ना? इसको क्या कहते हैं? CPU कहते हैं. But actually में CPU नहीं है. This is not CPU, right? It is a cabinet. CPU is present inside the cabinet, है ना? This is not a CPU. It is just a cabinet. It is called as actual name is cabinet. Okay. So don't say it as a CPU. Casually we say it as a CPU, but it is not a CPU. It is a cabinet inside which we have several hardware components. Like along with them, we have the CPU. Okay. तो CPU इसके अंदर होता है, motherboard पे रहता है. Okay, that is CPU cabinet is there, which consists of all the hardware and internal hardware components of a computer on which a computer runs. Keyboards, normal, we all know, है ना? How many types of keyboards are there? All of you, anyone can tell me like how many of types of keyboards are there? कितने तरह का कीबोर्ड आता है अभी के टाइम पे? सर 2 टाइप ऑफ कीबोर्ड्स होते हैं. एक तो सर उतना सर 2 होता है इतना पता है, बट क्या-क्या नाम होता है वो तो अभी याद नहीं. वायरलेस एंड वायर वायरलेस एंड वायर्ड कीबोर्ड. ओके. सर एक वो भी होता है ना सर, मतलब जिसमें एक साइंटिफिक कीबोर्ड टाइप कुछ बोलते हैं. मैकेनिकल कीबोर्ड. मैकेनिकल. हाँ राइट. हाँ, मैकेनिकल कीबोर्ड और एक आता है मेम्ब्रेन कीबोर्ड. ओके. सो देखिए लाइक मींस हाँ. टू टाइप, यहाँ टू कैटेगरीज है. सर अभी आप कौन सा कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे थे? आई वाज लाइक मींस मैंने वही कॉन्टेक्स्ट में पूछा था, मैकेनिकल मेम्ब्रेन वाला. ओके. और हाँ. क्योंकि सर जैसे इसने बोला ना कि वायर्ड और वायरलेस तो इसलिए. हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है. वायर्ड पहले तो देखिए, वायर्ड और वायरलेस में कैटेगराइजेशन किया जाता हाँ. है. उसके बाद वायर्ड में भी आपको मैकेनिकल कीबोर्ड और मेम्ब्रेन कीबोर्ड मिलता है, और वायरलेस में भी मैकेनिकल और मेम्ब्रेन मिलता है. ठीक है. हाँ. अच्छा, वायरलेस में भी मैकेनिकल मिलता है? हाँ, मिलेगा वायरलेस में भी. ठीक है. ओके सर. तो वो चीज ठीक है. So that is the like means first the keyboard is categorized into two parts. No, sorry, two different types of keyboard: wireless and wireless keyboard. Wireless and wired. So wireless keyboard, we insert the USB cable in the laptop USB Type A port or the PC port, and we start using the keyboard, right? But the wired keyboard, they come with the Bluetooth or they come with the USB receiver. छोटा सा एक USB receiver होता है, right? There is a small USB receiver coming with the along with the keyboard. We insert that USB receiver in the port of the laptop or the PC, and we start using the keyboard. This is what, right? So in the wireless wired, we have two types of keyboard: mechanical and membrane keyboard. Membrane keyboard is like what you can say, it is a normal, very normal keyboard. You can get a membrane keyboard like in 500 up to 1000 rupees. 1000 rupees, you can get a very good membrane keyboard. But mechanical keyboard are generally costly. Mechanical keyboards are, they are having a like what separate keys. Okay, all the keys are separate from each other, right? So that is what a mechanical keyboard and the typing experience, the like haptic is like very good in the mechanical keyboard. So that is what, that's why it is like costly, है ना? मतलब दोनों में से अच्छा कौन सा? ऑब्वियसली मैकेनिकल कीबोर्ड होता है ना? उसमें टाइपिंग वगैरह अच्छा होता है, दैट इज व्हाई कि वो थोड़ा कॉस्टली होता है. ओके. सी मेम्ब्रेन एंड मैकेनिकल कीबोर्ड. Like if you see a keyboard from like directly, if you see a keyboard, you cannot say like whether it is a mechanical or whether it is a membrane. But usually if you are using a membrane keyboard, you can identify easily, है ना, कौन सा मैकेनिकल है कौन सा मेम्ब्रेन है. मेम्ब्रेन में लाइक एक चिप रहता है. देयर इज अ चिप इन अ मेम्ब्रेन. दिस इज वेट अ सेकंड, लेट मी. Membrane, okay, this is see, this is a structure of a membrane keyboard. You can see there is like kind of membrane is there in which all the keys are placed directly. We are not getting the image of the exact membrane keyboard. Wait a second. Membrane keyboard. Ah, yeah, see. This kind of membrane is present, you know, like in the membrane keyboard. But in the mechanical keyboard, all the keys are separate. Okay, generally. So wireless and wired keyboard, है ना, like means if you are using a wired keyboard, wired keyboard to we all know very simple, right? Kind of wire is coming out from there, and we start using it by inserting to the device. But if you see the wireless keyboard, in the wireless we have two options: Bluetooth option and like what,
one USB receiver option. Okay, see, if you see a wireless keyboard, you can see a small USB receiver is given with this, right? This kind of small USB receiver. So we insert this USB receiver in the device port and we start using it, right? Simple. Okay, that's all. So two types of keyboards generally we are having right now in the market. One, which one is the good? Obviously mechanical. Mechanical is costly also, right? We have mouse. Hello? Mouse is simple, input device only, right? These are all the input devices: keyboard, mouse, input devices. Display monitor is the output device, right? See, now mouse also there are several types. Like, how many types of mouse are there all of you in the market right now? सेंसर Yeah. वाला भी मत- Sorry. सेंसर वाला माउस भी होता है। हाँ, नहीं, सेंसर वाला माउस सब होता है, जितने भी माउस होते हैं सभी में सेंसर होता है ना, बिना सेंसर के काम नहीं करेगा ना। ओके। हाँ, दो तरह का सेंसर आता है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंसर्स। वन इज ऑप्टिकल सेंसर, वन इज लेजर सेंसर। ओके, दो तरह का सेंसर वाला माउस आता है। वन इज ऑप्टिकल, wait, let me write it here. See, one is optical sensor mouse, okay, and one is laser sensor mouse. Laser sensor सेंसर के कैटेगरी में ये दो तरह का सेंसर, लाइक यू कैन गेट टू टाइप्स ऑफ सेंसर्स। ओके, mostly the normally the mouse which is used in almost everywhere, that is your optical sensor mouse. Okay, mostly laser sensor mouse, they are coming costly, these are like little bit expensive. See, mouses are also categorized into two parts, like sorry, two different types: wireless and wired. Wired mouse, wireless mouse. Okay, wired mouse, you know, all everyone, like there is a USB cable, right? Start wired mouse, so it is very much cheap. Like almost you can get a very good mouse within like 150, 200 rupees to 500 rupees. You can get a very good wired. But wireless mouse, in the wireless mouse, we have two different types of wireless mouses. Just like in the keyboard, है ना? Wireless mouse पे बात करते हैं, wireless. In the wireless mouse, we have two types of mouses, right? One is your USB receiver mouse, USB receiver, and one is your Bluetooth mouse, right? Bluetooth, and one is your hybrid mouse. See, USB receiver mouse, I think you would be using also, right? इसके साथ क्या होता है? Like there is a small USB receiver, just like you saw in the keyboard. We insert that USB receiver in the device and we turn on the switch from the mouse and we start using it, है ना? So always wireless mouse, they run on the batteries, right? Now some of the mouse, they are running on the batteries. Some of the mouses, they are running directly through charge, like it can be charged. Some of the mouses can be charged from the charger only, right? That is the thing. Bluetooth mouse, you don't need a USB receiver to connect a Bluetooth mouse. Bluetooth mouse can be connected via Bluetooth, right? Directly via Bluetooth you can connect. Hybrid mouse is a type of mouse which is having both features, USB receiver also and Bluetooth feature also. Okay, anyone you can use. Either you can use the Bluetooth to connect to the device, or either you can use the USB receiver to connect to the device. These are some of the types of mouses, I think, right? I think you are already aware of, सभी को पता होगा everyone, है ना? ये wireless mouse, right? Yes or no, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Uh, so these are the different types of wireless mouses. You can see like below we got a button, like see सर ये सब तो स्क्रॉल hmm, कर सर ये सब तो गेमिंग माउस हो गया। गेमिंग वाला अलग आता है और नॉर्मल जो वो काम करने वाला आता है ना, वो अलग आता है। इतना गेमिंग माउस डिटेल में ना, में पूछेगा क्या सर इंटरव्यू में? नहीं डिटेल में नहीं पूछेंगे, वो बस ये पूछेंगे नहीं आपके माउस कितने टाइप का होता है, ये बस हम लोग नॉलेज के लिए समझ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि क्योंकि एक सर अगर टेक्निकल, वैसा है तो फिर सर साइड में स्क्रॉल है वो अभी दिख रहा है वो तो सर पूरा फंक्शन सॉरी, मतलब साइड में ये नहीं वाला नहीं हम मतलब किसी से ये वाला प्लीज। सर ये वाला जो देख रहे हैं सर ये वाला समझ में नहीं आएगा। हाँ, ये अच्छा नहीं, ये सारा जो फीचर्स वगैरह रहते हैं, गेमिंग आरजीबी लाइट वगैरह, वैसे माउस देखिएगा तो बहुत सारे फीचर्स रहते हैं, ठीक है? वो वैसा कोई
कोई इंपॉर्टेंट वाला चीज नहीं है, ठीक है। वो मतलब आरजीबी लाइट का एक फीचर है, थोड़ा सा क्लासी दिखता है माउस, राइट, दैट इज। देखिए गेमिंग माउस अलग होता है। गेमिंग माउस में लाइक मीन्स की थोड़ा सा ज्यादा डीपीआई रहता है। माउस का भी अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना। डीपीआई का कॉन्सेप्ट है, पोलिंग रेट का कॉन्सेप्ट है। जितना ज्यादा डीपीआई रहता है उतना ज्यादा माउस आपका ट्रैवल करता है, मतलब एक स्क्रीन से लेफ्ट साइड से, मतलब जितना उसका ट्रैवल रेशियो रहेगा, जितना ज्यादा डीपीआई रहेगा कर्सर का, पोलिंग रेट जितना अच्छा रहेगा उतना स्मूथ रहेगा कर्सर, राइट। तो वो सारी चीजें है ना। अब उतना डिटेल में पूछते तो नहीं है, बट ये नॉलेज के लिए अच्छा चीज, लाइक बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, आप लोग टेक्निकल वाले हैं, राइट, तो ये पता होना चाहिए। दैट्स वाई इसको थोड़ा फंडामेंटल डिस्कस करें, ठीक है। Yeah. Yes, sir. हाँ, see, so like we are talking about the wireless mouse, है ना। In the wireless mouse, how you connect a wireless mouse? Simple है ना, like it is very simple. Just you insert the USB receiver in the device and then you switch, है ना। There is a like bottom, in the bottom of the wireless mouse, there is a button called as a switch. Like wait, let me show you. See, okay. So this one is the switch. Okay, this one. We turn on this. Yeah, we switch on the mouse from this one button only. See, this one. Okay, this kind of button is there, on and off button. So like we turn on the mouse from this, and the battery is like connected. Battery is inserted here, है ना। यहाँ पे battery insert करते हैं। Like how much? What kind of batteries, all of you? Majorly two types of batteries, right? One is your AAA batteries, one is your AA batteries. Just please mute, I think. So one is your AAA battery and one is AA battery. AAA and AA batteries. So what is a AAA battery and AA battery? Do you know everyone what is No, ये sir. पता है? No? No, sir. ओके, सी, देखिए ट्रिपल ए बैटरी जो होता है ना, वो जो आपके वॉल क्लॉक में लगता है, द बैटरीज विच वी यूज इन द वॉल क्लॉक इन द टीवी रिमोट। Motor सो ट्रिपल ए battery. बैटरीज, ओके। डबल ए बैटरी इज ऑफन, हाँ, डबल ए बैटरी इज ऑफन कॉल्ड एज पेंसिल बैटरी, थोड़ा सा पतला Yes, होता है, sir. ठीक है ना। सी, लेट मी शो यू लाइक डबल ए बैटरी, ट्रिपल ए बैटरी, हियर इट इज। यू विल अंडरस्टैंड, आप लोगों ने देखा हुआ है, बट इसका नेम रिमोट आई से थिंक, देखा है। डबल देखे हैं सर, ट्रिपल नहीं देखे हैं। अरे हाँ नहीं हाँ, सी ये वाला बैटरी। घड़ी का बैटरी में नहीं लगाया है तो। अच्छा, हाँ एवरीडे वाला। हाँ, सो दिस वन इज योर डबल ए बैटरी, ठीक है। दिस इज योर डबल ए, सी यहाँ पे लिखा है ना डबल ए बैटरी। यस एंड सर। दिस वन इज योर ट्रिपल ए बैटरी। सो ट्रिपल ए बैटरीज आर कंपेरेटिवली थिन, थोड़ा पतला होता है, पेंसिल बैटरी कहते हैं। दिस इज वी से इट एज पेंसिल बैटरी, ओके। एंड Yes, दिस वन sir. इज थिक, हाँ, दिस वन इज थिक इन साइज, थोड़ा सा मोटा होता है, बड़ा होता है, इसका डायमीटर ज्यादा होता है। ट्रिपल ए सर, शॉर्ट Yes, में sir. ये है कि ट्रिपल ए बैटरी इज यूज फॉर इन द रिमोट, लाइक टीवी और एसी। टीवी रिमोट, हाँ। हाँ, अभी के टाइम पे जो ज्यादा रिमोट्स आता है ना, जैसे जो आपका वाईफाई टीवी वाला रिमोट्स है, उसमें मेनली ये वाला बैटरी आता है। बट होता है, डिपेंड करता है कौन सा रिमोट है ना। ये भी आता है, ये भी आता है, तो चेक करना पड़ेगा कौन सा बैटरी है ना। यू हैव टू चेक इट। लाइक तो ये टेक्निकल नेम, वैसे तो पता नहीं कर सकते ना आप, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि ये मोटा बैटरी पतला बैटरी, वैसा नहीं। लाइक मीन्स वी से टेक्निकली वी से इट एज अ डबल बैटरी, टेक्निकली वी से इट एज अ ट्रिपल बैटरी, इसका नेम है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ट्रिपल इज लाइक व्हाट यू थिन बैटरी, पेंसिल बैटरी, बट डबल ए बैटरी इज द थिक वन, ओके, थिक बैटरी। दिस इज द थिंग, ओके। सो वायरलेस माउस दे आर कमिंग विद द बोथ टाइप ऑफ बैटरीज। वायरलेस माउस होता है ना, दोनों तरह का बैटरी लगता है उसमें। In the wireless mouse, we use triple A batteries also. We use double A batteries also. You have to check. Some of the wireless mouses they are coming with the double A, or some of the wireless mouses they are coming with the triple A battery option. In the keyboard also same. In the keyboard also, wireless keyboard we are talking about. So in the wireless keyboards also, like some of the keyboard they are having the option of double A batteries, or some of the wireless keyboard they are having the option of triple A batteries. That is what, right? Simple. तो वही चीज है। So these are some of the external parts of the computer that is, I think, you very well know, right? Now coming to the internal parts of the computer, right? Keep suppose we are talking about the CPU cabinet. तो CPU cabinet के अंदर क्या होता है? What are the components inside the CPU cabinet, right? See, क्या क्या component होता है? अच्छा, मदरबोर्ड, like हाँ, before I show you, tell me what are the components in सर internal hardware मदरबोर्ड हो component, गया, रैम होता है, ठीक है। और और फिर सर एसएसडी या फिर जो भी सर हार्ड हार्ड ड्राइव, ड्राइव होगी, एसएसडी होगी। मतलब ओके, रैम रोम, और फिर क्या बोलते हैं उसको। चीप रहेगा सर, ग्राफिक्स कार्ड। सर ग्राफिक्स कार्ड, मदरबोर्ड है सर, सीपीयू है, मदरबोर्ड, स्टोरेज यूनिट CPU, है, ओके। फैंस है सर, कूलिंग एलिमेंट लाइक हम्म, पोर्ट्स है सर।
Okay, ports है. Exactly, very good. See, so when you see a CPU cabinet, you can see these all hardware components inside a cabinet. ठीक है, ये सारा hardware component आपको दिख जाए. इसको अभी साइड करते हैं. Let me see. Okay. So this image, what you guys can see, now all of you, image. यहाँ पे खोलो इसके लिए see. So ये सारा hardware components होते हैं. These are all the hardware components of a PC cabinet. Okay. Motherboard, processor, RAM, optical drive, hard drive, CPU heatsink, floppy drive, system cooling fan, SMPS. Let us discuss one by one. ठीक है. What is a motherboard, all of you? क्या होता है motherboard? Sir, Can it is the anyone tell? heart of ये heart of मेन the CPU. सर्किट होता है जिससे कंप्यूटर वर्क करता है। हाँ. मतलब सर मदरबोर्ड ही है जो मतलब उसमें सारे चिप्स तो वगैरह पूरा लगे रहते सिस्टम को अकोमोडेट करता है सर मतलब। हम्म. Exactly, very good. Motherboard is the platform, all of you, where all the hardware components are installed or placed. जितने भी hardware component, all the hardware component like CPU, RAM, storage, SMPS, everything is connected to the motherboard. Okay, what I'm saying that all the internal hardware components like the CPU, RAM, SSD, SMPS or optical drive, everything is connected to directly to motherboard. And motherboard is only the chipset. It is only that common hardware component which is just connecting all the hardware components together. Okay, you can say this is a platform. Okay, that is your motherboard. And a motherboard you have seen already, like in almost every device. In the TV also we have motherboard. In a laptop, smartphone, computer, in यस every सर। device we have, right? Every device we have motherboard. Yeah. Then we have CPU as a processor. What is a CPU, all of you? हैं। Sir, CPU is the brain of the computer. इट इज CPU द is the ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। brain of the computer. Why we say it as the brain of a computer? Because it performs all the operations, all the यस सर। Yes. calculations, all the operations, all the instruction are given by the CPU. मतलब किसी भी एक हार्डवेयर कंपोनेंट को इंस्ट्रक्शन देना है तो कौन देता है? CPU देता है. CPU. Like this. Yeah, that is what. Okay. Then we have RAM. Right? RAM is a type of memory we all know. है ना? एक तरह का memory है. When we run a Yes, when sir. we run a Volatile device, right? memory. हाँ, volatile. यस So सर। when we run a computer, so all the data is stored temporarily मतलब in the RAM, है ना? When we run any process in our device, right? So it is a type of memory. We'll discuss in detail also. यस Then we have optical drive. Achha, what is this optical drive? Do you know what is this optical drive? Sir, CD-ROM, secondary sir. device other than uh, Sir, CD-ROM. Storage, sir. CD-ROM. yes, like CD-ROM, sir. Exactly. Like means you have seen all of you like in the old laptops we get a button in the side and we press that button so there a slot is opening in which we insert the CD DVD. मतलब पहले के लैपटॉप में एक ऐसा स्लॉट होता है ना जैसे बटन प्रेस करते तो Yes, sir. साइड से एक स्लॉट खुल जाएगा जहाँ पे अपना Yes, सीडी sir. प्लेस सीडी या डीवीडी, राइट? है ना? So Yes. this optical drive is basically a device. It is basically a component which is used to read the data which is stored in the CD DVD. Like this kind of CD is inserted here. Okay, CD. So this CD or DVD is inserted in this optical drive. Okay, and this optical drive is reading the data which is stored in the CD. Okay, but nowadays we don't use it, right? Obviously we don't use it. आज के डेट में क्या ये यूज होता है क्या? नहीं ना. We don't No, use, sir. right? Now today this is obsolete, right? Obsolete हो चुका है. Like today we have the concept of SSD, fast storage, chip storage, right? We don't use it anymore, right? Optical drive, but it is important. Like means we understand, okay, what previously we used to have. So optical drive was used previously earlier, but not nowadays. Okay, we are having the concept of SSDs, fast storages today. Okay, so this optical drive were used to use the like what is to read the data with in the STD. Okay, that is the thing. Then we have hard drive. Now, what is this hard drive, all of you? Storage unit. Okay, storage unit. Hard Yes, drive in the sir. computer. Hard drive in a computer is called as, it is referred to the SSD or the HDD. In the computer, laptop,
hard drive is called as your SSD or your HDD, right? Nowadays we are using the SSD or the HDD, all of you. SSD, sir, mostly SSD. SSD. Why don't we use as HDD? Why? Sir, it's a old technology and it's like slow. That's why we are switching to SSD. So with the help of Exactly. SSD, we can easily transfer the data from and सर SSD से ना हम easily डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं from one software to another. Okay. And इससे सर जो परफॉर्मेंस है लैपटॉप या किसी भी पीसी की तो वो काफी आसान हो जाती है. हाँ. Easier The Okay. read write speed ज़्यादा है SSD का, इसलिए हम लोग यूज Read करते and हैं उसको. exactly. Why? Because today we are using the SSDs, SSD. We don't use HDD. HDD, why we don't use? Because HDDs are very slow. HDDs are actually very slow. Very slow means what? Slow read and write speed. But SSDs are very fast. SSDs are very fast. So that's why we are using nowadays SSDs as a hard drive. So when we say hard drive, all of you, just think of it that as your secondary storage, your SSD. है ना, जब भी हार्ड ड्राइव की बात करेंगे तो वही हमारा एसएसडी की बात कर रहे हैं. It means you can say hard drive in the sense it can be your secondary or external storage also, like your pen drive or the any card reader or micro SD card, micro SD card, that can be a hard drive also. But usually inside the computer we use SSD, or nowadays SSD, HDD we don't use, but you can use हो सकता है अभी भी. ऐसा नहीं हुआ कि like this is not obsolete. Okay, we can still use the HDD, and some of the people they still use the HDD, है ना. Why don't we use because of the slow speed only? And we'll discuss in detail. Then you'll understand it. That's the thing. Okay. Now we have the CPU heatsink. अच्छा, what is the CPU heatsink? और ये क्या है? ये तो आपको फैन दिख रहा सर होगा, right? हीट को This is a fan. डिस्ट्रीब्यूट करता है सर, लाइक हाँ. लाइक सीपीयू को हीट होने नहीं देता सर. Okay. ठीक है. Anyone else? सीपीयू हीट सिंक कैसा सर? जब हमारा सीपीयू जब गर्म हो जाता है ना, तो ये एक फैन होता है जो उसको कूल करता है. हाँ. Exactly. Very good. CPU fan भी सही है ना. CPU fan और CPU heatsink जो होता है ना, ये होता है. ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है, दिस कंपोनेंट इज कॉल्ड एज सीपीयू हीट सिंक. दिस सिल्वर कलर मेटल यू कैन सी ना, ये वाला सिल्वर वाला मेटल, दिस इज योर सीपीयू हीट सिंक, एंड दिस इज योर सीपीयू फैन. ये फैन है. सो together we say it as a CPU heatsink, or together we say it as a CPU fan. So this CPU fan is placed on the top of your processor. See, यहाँ पे आपको processor दिख रहा है, like this is your processor, you can see this one. So this one is the processor, and on the top of the Yes, sir. processor, है ना, on the top of the processor we place the CPU fan. मतलब प्रोसेसर के ठीक ऊपर इसको ऐसा प्लेस कर दिया जाता है. ठीक है, ये प्रोसेसर है यहाँ पे, और ठीक इसके ऊपर रख देंगे इसको. यहाँ पे नट्स रहता है, यहाँ पे सी स्क्रूज रहेगा. यहाँ पे हियर वी हैव द स्क्रूज. ओके, तो स्क्रू टाइट कर दिया जाता है, लाइक यू कैन सी. So the CPU fan is just placed on the processor just to reduce the heat of the processor, because all we know that when we run a computer, so processor generate too much of heat. Processor can be like generate too much heat. Just to reduce the heat, we use the CPU fan like this directly on the processor. So this is not the system fan. This is the CPU fan. Yes. That then we have a floppy drive. है ना. अच्छा, what is this floppy drive? सर फ्लॉपी ड्राइव सर पहले इट्स यूज होता था आल्सो पहले के स्टोरेज ज़माने में, यूनिट जैसे सर. कि सर हाँ. पहले क्या होता था कि मतलब कुछ भी डाटा वाटा जो होता था सर, एक फ्लॉपी ड्राइव आता था, उसमें स्टोर होता था जो सीपीयू में लगता था फिर. बट इट्स एज सेकेंडरी रिवॉल्यूशन स्टोरेज. बिगन, फ्लॉपी अब तो फ्लॉपी ड्राइव कोई यूज़ नहीं करता. अब तो सर लोग पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर रहे हैं. तो पहले Exactly. फ्लॉपी ड्राइव बहुत यूज़ होता था. Exactly, very good. This kind of floppy disk we use, all of it, है ना. इस तरह का एक floppy disk होता है, like this is your floppy disk, सर ये है ना. आई थिंक 4 MB का होता था ना सर? या वेरी लेस, मतलब बहुत ही कम एमबी में होता था, है ना. इस लाइक द हाँ साइज सर, इन एमबी. 4 M सर, क्योंकि मेरे पास था हाँ. सर 4 MB का. हाँ, 4 MB 4 MB का रहता, बहुत ही छोटा रहता था. 4 MB 3 MB, लाइक मीन्स यू कैन गेट, है ना. सो दिस काइंड ऑफ फ्लॉपी डिस्क वी इंसर्ट इन द फ्लॉपी ड्राइव, and this floppy drive is used to read the data which is stored in the floppy disk, and very small size, है ना. So nowadays we don't use it.
ये टेक्नोलॉजी आज यूज नहीं हो रहा है क्योंकि दिस इज लाइक ऑब्सोलेट, राइट, ऑब्सोलेट हो चुका है। सर एक्चुअली में ये हाँ इसलिए हुआ है क्योंकि सर ये बहुत छोटा साइज होने की वजह से इसको इसका यूज नहीं हो पाया। हाँ एग्जैक्टली, 4 MB का लाइन मिस किया। आजकल तो आप कैचे फाइल जो होता है टेम्पररी फाइल ही मतलब 1 GB का हो जाता है, तो 4 MB मतलब कहाँ ही, समझ रहे हैं ना, लाइक मीन्स 4 MB बहुत ही कम हो गया, राइट। हाँ तो आजकल यूज नहीं हो रहा, लाइक हाँ दिस फ्लॉपी ड्राइव वी डोंट यूज इट नाउ डेज, दिस ऑप्टिकल ड्राइव वी डोंट यूज इट नाउ डेज, है ना, these are obsolete. Okay, this is the thing. हाँ, then coming to the system fan. अच्छा, what is Yes, the sir. system fan? हाँ, system fan simple. सर It is the सिस्टम fan. हाँ, cabinet fan you can say, cabinet fan or system fan, which is used to blow out the heat of the cabinet, है ना, just to make your cabinet cool. cabinet को ठंडा रखने का काम करता है ना. So you can see यहाँ पे एक fan लगा हुआ है, like you can see in the cabinet you can see here it is a fan slot. यहाँ पे एक fan लगता है, here you have a fan, so this is called a system fan. ओके, सिंपल. सो इन द कैबिनेट आप लोगों ने देखा होगा जिनका कोई गेमिंग पीसी रहता है उसमें और भी ज्यादा फैंस रहते हैं, राइट, गेमिंग वाले कैबिनेट, गेमिंग पीसी के कैबिनेट में वी चार हैव है। सो मेनी फैंस, लाइक मोर देन 4 फैंस, 5 फैंस, 6 फैंस, राइट. सो जितना ज्यादा फैन होता है उतना हीट रिड्यूस करने के लिए होता है. ओके, दैट इज थिंग. देन वी हैव एसएमपीएस. अच्छा, व्हाट इज दिस एसएमपीएस, ऑल ऑफ यू, एनीवन कैन सर टेल ये क्या होता सिंपल। सर ये पावर सप्लाई देता है हाँ है? कैबिनेट को। पावर सप्लाई। अरे एसएम यस सर। हाँ एग्जैक्टली. सर एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। Wait, I think please other people mute it. Yeah. See, you can keep your mic muted and then when you have to say the answer, no, then you can unmute. ठीक है, आप लोग म्यूट करके रख सकते हैं, जब कुछ बोलना होगा तो आप अनम्यूट कीजिएगा. ओके, ठीक है, that is correct. Okay, so SMPS, it is basically called as power supply, provides the power supply to the computer, and the main function of the SMPS is to convert the AC current to DC current. AC to DC, है ना, this is the main function. Like सर why we use क्या यूपीएस होता है क्या सर? UPS, we say PSU. PSU, ठीक है, पावर सप्लाई यूनिट. इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पावर सप्लाई यूनिट, फुल फॉर्म. एसएमपीएस इज बेसिकली अ टाइप ऑफ पीएसयू. ठीक है, एसएमपीएस जो होता है ना, पीएसयू का एक टाइप होता है. So SMPS full form is switch mode power supply. Switch mode power supply. Okay, and this SMPS is very important component in a computer. Why? Because we cannot run the computer directly with the power source. Because in the computer we don't use it a battery, right? Battery पे तो run नहीं करते ना computer को. Computer we run on directly यस power सर। source. Right? So what will happen if suppose you don't use SMPS and you directly insert your computer to the power source? क्या होगा? What will happen? शॉर्ट सर्किट, है ना. लाइक मीन्स कि आपने एसएमपीएस को हटा दिया, कंप्यूटर को डायरेक्टली एकदम पावर सोर्स में लगा दीजिए. कैबिनेट जो है ना, कैबिनेट का जो केबल है, तार है, उसको डायरेक्टली अपना बोर्ड में लगा दीजिए एंड स्विच ऑन कर दीजिए. क्या होगा? पूरा कैबिनेट उड़ जाएगा, मदरबोर्ड खराब हो जाएगा, उड़ जाएगा, लाइक मीन्स शॉर्ट सर्किट हो जाएगा. ओके, that what I'm saying, all of you, that suppose you are directly inserting the cable from the cabinet to the directly power source, that then short circuit will happen, है ना, without SMPS, because we all know that we cannot run a computer directly on AC current, because in the power supply in the house, in the office, everywhere we have the power supply of AC output, right? AC current is there, alternate current. So that is fluctuating current, है ना. If you directly connect your PC to the directly AC current source, your device, your computer will short circuit. That's why we use the SMPS device, and this device basically this convert the AC current to DC current, and then DC current is like provided to the motherboard and all the hardware components. So all the hardware component requires DC current, not the AC current. ठीक है, DC current is like a direct current, है ना, like batteries वगैरह में जो current रहता है ना, वो DC current रहता है. In the batteries, the current which is stored, it is DC current, and it is not fluctuating. Okay, so that is the thing. That's why we use the SMPS. And some of the people, they say it as a power supply. We say it as PSU, or we say it as SMPS. The actual name of the device is SMPS only, but you can say it as a power supply also. Okay, so don't get confused between the names. Names are different, purpose is same. Okay, in every computer we use, there is no any computer which can run without a SMPS or without a PSU.
ओके, इन द लैपटॉप यू डोंट यूज एसएमपीएस ऑल ऑफ यू, लैपटॉप में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है एसएमपीएस का, उसमें सिंपल बैटरी रहता है ना, इन द लैपटॉप सिंपल बैटरी इज देयर, डायरेक्टली वी चार्ज द बैटरी एंड स्टार्ट यूजिंग द लैपटॉप, राइट, सिंपल. बट इन द पीसी computer we use SMPS always. And where is the SMPS placed? Inside your cabinet, cabinet के अंदर रहता है, ठीक है. This is the thing. So these are the some important hardware, internal hardware components without which a computer cannot run. इसके बिना कंप्यूटर रन नहीं कर सकते, कुछ इंपॉर्टेंट वाले. इसके अलावा और भी चीजें होती है, राइट, सम ऑफ द मोर थिंग्स आर देयर, लाइक एनआईसी इज देयर, लाइक ग्राफिक्स कार्ड इज देयर, ग्राफिक्स कार्ड, जीपीयू, राइट, है ना. So these are all some of the more components. We'll discuss one by one in detail, है ना. But let us have a focus on today this CPU. ठीक है, CPU पे बात करते हैं आज. कितने तरह के CPU है, how many types and how many, what generation, concept, speed, cores, threads, so many things, right? So that's all. These are all the hardware components. ठीक है, ये clear है? All the hardware components are clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. See all of you. So the things what I will discuss here, now you guys can take the screenshot at the same time only. And if you miss any of the screenshot, you can tell me. I will show it again. Okay. So first of all, you guys can take the screenshot of this one. Okay. Done, sir. Done. Okay. Okay. And then take this one. This is your all the internal parts of the computer. Done, sir. नहीं नहीं अरे मेरा नहीं था। Okay. Okay. Take. हाँ सर Done, sir. Done. Okay. All right. See. Now let us see the CPU and the parts, like different types of processes. Okay. See. Just a moment. CPU पे बात करते हैं. CPU, है ना. So what is the CPU, all of you? What is the full form? Central Processing Unit. Central Processing Unit. Okay, very good. ठीक है. And what is the definition? क्या कहेंगे? Like means suppose you are asked about the CPU, so what the definition you can say? CPU is a brain of computer, and CPU can calculate sun and Okay. Exactly. See, very good. CPU, we say it as a brain of the computer system. Why we say it as a brain? Because just like in a human body, how the brain functions. Brain only store every like brains only stores the instruction, give the instruction, right? And brain only take the decision in the human body, right? So similarly, you can say this is the brain of a computer system which performs all the operations, which gives all the instructions and perform all the calculation. Okay. So see, Okay, sir. so what is a CPU? It is the main component in a computer that performs all processing, calculations, decision making, है ना? And it acts as the brain of a computer system, executing instructions and controlling operations of all hardware components. Let's see, if suppose I'm writing about the CPU, मैंने यहाँ पे कीबोर्ड में कुछ भी टाइप किया. I'm typing anything from the keyboard, right? On the keyboard, I'm just typing anything. So who is giving the instruction to the monitor that you have to type this? मैंने यहाँ पे टाइप किया B. सो मॉनिटर को कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि मतलब बी टाइप करना है, बी डिस्प्ले करना है, राइट. CPU. मैंने यहाँ पे टाइप, हाँ, सीपीयू, यस, मैंने यहाँ पे टाइप किया एच. सो मॉनिटर को कौन ये बता रहा है कि आपको एच प्रिंट करना है, राइट मीन्स, है ना, यू हैव टू डिस्प्ले एच. सो सीपीयू टेक्स इनपुट and generate the output. So give the like output is shown in the output devices only. So CPU takes the input, generate the output. That is the thing. This is called as processing. है ना, processing. CPU process the instructions, CPU process the input commands, like means you can say, ठीक है. All the calculations means addition, subtraction, decision making, right.
ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या नहीं होगा, लेकिन ये जो हमारा ब्रेन जो कैपेबल है डिसीजन लेने का, वैसे सीपीयू भी कैपेबल है। सीपीयू इज आल्सो capable to take the decision. I think you have already studied in the programming, if else if, right? I think you have studied about this already Yes, sir. in the program, right? Yes, sir. That is what. So this thing is done by the CPU only, right? Decision making वही चीज है, ठीक है, calculations and decision making. See, now we have several components of a CPU. What are the components of a CPU, all of you? Components of a CPU. क्या 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 components है बताइए? The ALU, ALU, okay, CU, control unit, and okay. MU, mm, हाँ, AMU you MU. can say like it is inside your ALU only. Main component जो है यहाँ पे CU, ALU and Uh, registers, ठीक है, yeah. registers, registers, ठीक है. What is CU? CU, this is the control unit, control unit. What is ALU? What is the full form of ALU, all of you? arithmetic logic unit. Arithmetic logical unit. Arithmetic and logical. Okay, okay, and registers, ठीक है. तो we'll discuss here what is the register then ऐसे, ठीक है. तो CU क्या है everyone? It is, as we all know, that it is a control unit. So it is acting like a manager of the whole computer, like it is only giving all the instruction. CU क्या करता है कि सारा इंस्ट्रक्शन यही देता है, ठीक है. CU only gives all the instructions. Okay, like means कि if Yes. suppose I am trying to, हाँ, if I am trying to open a file, मुझे SSD से कुछ फाइल ओपन करना है, तो the CU or the control unit will give the instruction that the user is trying to access any this kind of file from the SSD. Okay, तो CU को पता है कि हमारा जो मेमोरी में जो डेटा स्टोर्ड है उसका एड्रेस क्या है ना. Like means CU knows the address of the data which is stored in our memory. So CU, you can say all of you, gives all the instructions, okay, performs all the operations and send the control signals to input and output devices. ठीक है, तो यही मतलब जैसे कंपनी में एक मैनेजर होता है, तो वही कंट्रोल यूनिट क्या है, मैनेजर है, सबको इंस्ट्रक्शन यही देता है, ठीक है. दैट इज द थिंग. ओके, देन ALU, कमिंग टू ALU, ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस ALU, ऑल ऑफ यू? ALU क्या है, व्हाट इज ALU, क्या करता है? सर ये लॉजिकल ऑपरेशंस करता है सर, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सब मेन, हाँ एग्जैक्ट. लाइक सर मेन प्रोसेस जो करना है सो सारा करता है एएलयू, कमांड देता है कंट्रोल यूनिट, लाइक दैट. एग्जैक्टली वही है, मतलब इट परफॉर्म्स ऑल द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस. अरिथमेटिक मींस ऑल ऑफ यू लाइक मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऑल द थिंग्स, कैलकुलेशंस बेसिकली. एंड लॉजिकल ऑपरेशंस मींस एंड, और, इफ, एल्स, ये सारी चीज, ठीक है. सी, सो इट परफॉर्म्स ऑल, हाँ, जैसे ये आप कह सकते हैं कि मतलब कैलकुलेटर है, ठीक है. मतलब ये कैलकुलेटर के अलावा भी है, मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि CA है, ये हमारा कंप्यूटर का CA, चार्टेड अकाउंट, like performs all the mathematical and logical operations, okay, like addition, subtraction, these are all the logical operations, like and, or, greater than, smaller than. Like means if suppose I'm writing two numbers, all of you, मैंने यहाँ पे दो नंबर लिखा है, let's say I'm writing 21 and यहाँ पे 45. How the computer knows that 45 is greater? ठीक है, कंप्यूटर को कैसे पता है कि 45 बड़ा नंबर है, 21 छोटा नंबर है, कंप्यूटर को कैसे पता चल रहा है? सो दिस ALU इज रेस्पॉन्सिबल, ठीक है. ALU उसको चेक करता है कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा छोटा नंबर, राइट. ALU tells the detect that which one is the greater number, which one is the smaller number. That is the main function, right? So this kind of decision making was done by this ALU. Decision, okay. Here I have written decision making. Then we have register, ठीक है. अब register क्या होता है? What is the register? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज है सर, लाइक हाँ सबसे फास्टेस्ट है, मेमोरी सीपीयू से सबसे नजदीक है ये. इसको हम लोग exactly. यूज करते हैं टेम्पोररी स्टोरेज के टाइप से, लाइक इंटरमीडिएट रिजल्ट स्टोर करना हो या फिर कुछ डेटा रिजल्ट स्टोर करना हो, सर. हाँ, simple, हाँ, very good. Register is a type of memory which is storing the data or the instructions of the CPU. मतलब CPU या फिर CU जो भी इंस्ट्रक्शन देता है ना, तो वो इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है रजिस्टर अपने अंदर, ठीक है. या फिर ALU का कोई आउटपुट है, तो आउटपुट को भी वो स्टोर करके रखता है रजिस्टर.
Okay, what I'm saying all of you, that the instruction given by the CU is register holds. Okay, register holds the instructions temporarily, not permanently. Okay, so registers is a type of memory, or it is a very fast memory. Like means in the computer system, is if you say which one is the fastest memory, fastest type of memory, so register. Okay, and the small is very size. Registers small, sorry, sizes. Sorry, what I'm saying, no, like register size is very small. ठीक है, बहुत ही छोटा होता है, लेकिन hardly in KB. Okay, not even in MB. तो ये तो 1 बाइट का सबसे होता है सर। हाँ, बहुत 1 बाइट या लाइक मीन्स यू कैन से लाइक हार्डली केबी में जा सकता है। ठीक है, सो रजिस्टर्स जो होता है उसका साइज बहुत छोटा होता है, बहुत बहुत ही फास्ट होता है। ठीक है, वेरी फास्ट, लाइक इट इज वेरी फास्ट, लाइक इफ यू कंपेयर SSD और इफ यू कंपेयर लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी, लाइक it is very fast. Okay, so registers, if you are asked about this question, which one is the fastest and the smallest memory in the computer system, that is your register. And what it does basically, it stores the instructions uh, of your CU. ठीक है, सीयू का या फिर सीपीयू के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी इनपुट आउटपुट जो भी हो रहा है, उसको टेम्पररी होल्ड करके रखता है। ओके, दैट इज, so these are the three major components of a CPU. Okay. See, so that is your like fundamental knowledge. Okay. Now we'll not discuss about the CPU more things, because if you go to discuss about CPU only, like so many things are there, right? Address, bus concepts. Yeah. But anyways, yeah. Coming to the technical things here. See, अब यहाँ पे आते हैं प्रोसेसर के ऊपर बात करते हैं। Like we are talking about the processor, right? CPU क्या है? प्रोसेसर ही है ना? जो हम लोग डिवाइस, फोन में, लैपटॉप में, हर जगह प्रोसेसर की बात करते हैं, right? So how many types of processors are there in the laptop? Like suppose if you are going to market, all of you, and you are trying to purchase a processor for your PC or for your laptop. So how many types of processor you can get this at this time? Mostly, sir, three. No, for computer, mostly two, like Intel and AMD. But for mobile devices, there is also NVIDIA Uh, and Snapdragon. okay, very Yes, good. sir. ठीक है, हाँ देखिए, करेक्ट है। So in the PC and the laptop, mostly we get Intel processor or the AMD Ryzen, right? Two types of processor. These are for your Windows laptop. In the Windows laptop, one more processor is coming out there, all of you. Windows laptop or PC also, है ना? Snapdragon. I think you have heard about this Snapdragon. सुना है आप लोगों ने Snapdragon के बारे में, Yes, sir. Yes, है ना? sir. हाँ, Yes, sir. ये स्नैपड्रैगन वाले क्या करते हैं, सिर्फ फोन के लिए प्रोसेसर बनाते थे पहले, है ना? पहले इनका खाली फोन में आता था प्रोसेसर, बट अभी के टाइम पे लैपटॉप में भी आ रहा है ना? Earlier the Snapdragon processors was coming in only in the smartphone, but nowadays they are coming in the laptop also. Okay, in the Windows laptop especially. So now in the Windows laptop we have three types of processors: Intel, AMD, and a Snapdragon. In the MacBook में क्या आता है everyone? In MacBook, M chip, right? In the MacBook we have M chip, M1, M2, M3, M4, M5, right? These are the M chips in the MacBook. अच्छा, फोन में कैसे प्रोसेसर आता है ना, लाइक फोन में क्या क्या प्रोसेसर आता है बताइए everyone. How many types of processors are coming in the phones, smartphones? तो कौन? स्नैपड्रैगन है सर, NVIDIA and स्नैपड्रैगन है, क्वालकॉम है, और कलर हम्म ओएस है। हम्म, MediaTek है सर। फिर फिर हाँ, मैकबुक में तो एप्पल ब्लैकबेरी है। का भी आता था। फिर मैक OS है, मतलब मैक iOS है, वो तो ऑपरेटिंग सिस्टम है। iOS तो ऑपरेटिंग सिस्टम। यस सर, और प्रोसेसर मोस्टली यही तीन है सर। हाँ, स्नैपड्रैगन सर सबसे फेमस स्नैपड्रैगन और क्वालकॉम है। सैमसंग का भी आता है एक। क्वालकॉम तो वही हो गया ना, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन तो एक ही है ना, यस सर, क्वालकॉम शायद स्नैपड्रैगन। दोनों ने मर्ज किया ना सर। हाँ नहीं बट, एक ही कंपनी है दोनों। हाँ नहीं नहीं फोन में तो मर्ज मतलब एक ही किया। आता मोस्टली है। के। हाँ, फोन में जहां तक मैंने देखा है कि क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर तो एक ही आता है ना। हाँ, एनीवेज यस सर, जो एक भी है ही है। ना, हाँ, स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक, एक्सिनोस, ये यस सारे सर, जो नॉर्मल सैमसंग। एंड्रॉइड फोन्स में आते हैं ना, दीज आर स्नैपड्रैगन, मीडियाटेक और एक्सिनोस, दीज आर कमिंग इन द नॉर्मल एंड्रॉइड फोन्स। इन द आईफोन वी हैव ए, आई थिंक ए चिप ना, ए बायोनिक आई थिंक। A3 बायोनिक, यस हाँ सर। हाँ, ए बायोनिक। So in A5। the iPhone we have this thing, but in the laptop or computer totally Yes, sir. different type of processor. ठीक है, लैपटॉप या कंप्यूटर में फोन वाला नहीं आता है, लैपटॉप और कंप्यूटर का अलग प्रोसेसर है।
ठीक है, इन द लैपटॉप पीसी वी हैव डिफरेंट प्रोसेसर। तो इन द लैपटॉप और पीसी ऑल ऑफ यू कैन गेट इंटेल AMD। पीसी के मामले में क्या हो रहा है ना, देखिए पीसी कंप्यूटर, पीसी में क्या होता है, दो ही तरह का प्रोसेसर ज्यादा आता है, या तो इंटेल का होगा या तो AMD का होगा, है ना, इन द पीसी आइदर इंटेल आइदर AMD। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द लैपटॉप, लैपटॉप में क्या है ना, विंडोज लैपटॉप में बात करेंगे, तो विंडोज लैपटॉप में आपका तीन तरह का प्रोसेसर अभी के टाइम पे मिल रहा है। ओके, इन द विंडोज लैपटॉप वी आर गेटिंग थ्री टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स, इंटेल AMD एंड स्नैपड्रैगन। ओके, सी अब देखिए यहाँ पे वन थिंग इज देयर ऑल ऑफ यू दैट इज स्नैपड्रैगन प्रोसेसर देयर, दिस इज न्यू, न्यू इन द लैपटॉप सेगमेंट। ठीक है, इनका जो प्रोसेसर है ना अभी थोड़ा सा नया है लैपटॉप के सेगमेंट में। सो Yes. इट इज हैविंग, हाँ इट इज हैविंग स्टिल सम कंपेटिबिलिटी इशू, थोड़ा कंपेटिबिलिटी इशू है इसमें। इंटेल या राइजन के जैसा वो कंपेटिबल नहीं है अभी, है ना, दैट इज इट इज नॉट दैट मच कंपेटिबल जस्ट लाइक द इंटेल ऑन द राइजन प्रोसेसर, बट इट इज स्टिल वेरी सर पावर एनवीडिया एफिशिएंट। भी तो। एनवीडिया का तो ग्राफिक्स कार्ड आता है ना ज्यादातर, एनवीडिया जो आता है ना, एनवीडिया का ग्राफिक्स कार्ड है, ठीक है, वो अच्छा। सीपीयू नहीं है, एनवीडिया का जो आता है वो जीपीयू है, जीपीयू। अच्छा अच्छा। हाँ जीपीयू, ठीक है, सीपीयू में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो सीपीयू में यही आता है। हाँ, okay, so yeah, what I was talking about that the Snapdragon processor they are new to the market segment, new to the laptop, but what is the good thing about the Snapdragon processor? See, Snapdragon processor provide very good battery life. Like means in one charge cycle, you can run your laptop for up to 8 to 9 hours easily. 8 से 9 घंटे तक यूज कर सकते हैं लैपटॉप को इजिली, एक बार चार्ज करने के बाद। वो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर में हो रहा है, जैसे मैकबुक में होता है, हाउ इट हैपेंस इन द मैकबुक, है ना। इन द मैकबुक ऑल्सो इट प्रोवाइड वेरी गुड बैटरी लाइफ। इन वन चार्ज साइकिल यू कैन यूज योर मैकबुक, लाइक यू कैन रन योर मैकबुक कंटिन्यूअसली फॉर 9 to 10 आवर्स, 9 से 10 घंटे का बैकअप इजिली मिल जाता है, राइट। बट विंडोज लैपटॉप में बात करते हैं जहाँ पे इंटेल या AMD का प्रोसेसर है, इन विंडोज लैपटॉप इन वेयर वी हैव इंटेल और AMD प्रोसेसर, सो व्हाट इज द एवरेज बैटरी लाइफ, नॉर्मल बैटरी लाइफ कितना मिलता है एक एक चार्ज साइकिल पे? हार्डली सर 4 से 5 4 to आवर्स। 5 hours, sir. एग्जैक्टली, हाँ 4 to 5 आवर्स, है ना, हार्डली 4 to 5 आवर्स। उसमें भी अगर गेमिंग लैपटॉप होगा तो और भी कम हो जाएगा, है ना। इन द गेमिंग लैपटॉप तो भी हैव और मोर लेस, लाइक मीन्स की हार्डली 2 आवर्स 3 आवर्स का बैटरी बैकअप गेमिंग लैपटॉप में। यस सर। उसमें ऊपर उल्टा अगर आप बैटरी पे गेम खेलने लग जाइएगा तो मतलब एक हाफ एन आवर का भी नहीं मिलेगा, 1 आवर का भी बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा, है ना, हार्डली 1 आवर। हाँ दैट इज थिंग। सी सो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मैंने क्या बोला, लाइक व्हाट इज स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आर नॉट दैट मच यूज्ड, अभी के टाइम पे उतना भी यूज नहीं हो रहा, बट फिर भी इसका बेनिफिट है, अभी बहुत सारे लैपटॉप है जिसमें आ रहा है, ठीक है। सम ऑफ द लैपटॉप दे आर कमिंग विद, इसका बेनिफिट यही है, बेनिफिट ऑफ द स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इज दैट इट प्रोवाइड वेरी गुड बैटरी लाइफ along with better performance, परफॉर्मेंस इज ऑल्सो गुड, बैटरी लाइफ इज ऑल्सो गुड, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल कोई एक प्रोसेसर होता है वहां पे क्या होता है, अगर परफॉर्मेंस इंक्रीज करेंगे ना तो बैटरी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बैटरी थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो परफॉर्मेंस कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ये एक नॉर्मल होता है प्रोसेसर के अंदर। बट स्नैपड्रैगन और मैकबुक में ऐसा नहीं है, इनमें बैटरी भी अच्छा मिलता है, परफॉर्मेंस भी अच्छे मिलते हैं, ना। what I am saying all of you, see that I am saying that when you get a Intel or Ryzen processor, you have to compromise battery if suppose you want high performance, or if you want high battery life, more battery life, then you have to compromise performance. That is what I am saying. But in the Snapdragon or the Apple M chips, battery life is also very good and performance is also very good. That is the benefit, है ना? But anyways, nowadays only Yes. Intel and Ryzen, Intel and AMD they are having the monopoly in the laptop and the PC. इनका monopoly है ना, लैपटॉप हो या पीसी हो, हर एक मतलब 95% लैपटॉप और द पीसी दे आर कमिंग विद द AMD और Intel processor. Some of the laptop or PC coming with the Ryzen, वही AMD Ryzen same thing and Intel. Okay, see everyone. So इस पे आते हैं हम लोग, like what are this, है ना, इसमें भी अलग अलग families है, like we have several families, categories, speed, generation, concepts, right? So Intel processor, in the Intel we have several families like i3, i5, i7, i10, चार families हैं, ठीक है। अभी के टाइम पे इनका एक अल्ट्रा सीरीज आया है, आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट दिस ऑल ऑफ यू। इंटेल दे आर हैविंग अ न्यू सीरीज कॉल्ड एज अल्ट्रा Yes, sir. सीरीज, राइट। अल्ट्रा 5, अल्ट्रा 7, अल्ट्रा 9, दीज आर द सीरीज, बट दीज आर कॉस्टली, थोड़ा कॉस्टली है ना अभी के टाइम पे। लाइक मींस इफ यू वांट टू अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर, यू हैव टू स्पेंड मोर देन 60,000 if suppose you are buying
laptop, or you're purchasing a laptop like more than 60K, 70K, then you can expect the Ultra series processor. Why? Because it is having a special features called as NPU. इसमें एक स्पेशल फीचर होता है एनपीयू का। ठीक है, इसके अलावा भी फीचर है कि अल्ट्रा सीरीज का जो प्रोसेसर होता है ना, कि परफॉर्मेंस के साथ साथ बैटरी लाइफ भी अच्छा होता है इसमें। ओके, अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर आर फोकस्ड टू प्रोवाइड वेरी गुड परफॉर्मेंस along with very good battery life, है ना, that is your ultra series benefit. And they are having a specialized unit called as NPU. What is NPU, all of you? इसके साथ NPU आता है, इसका मतलब क्या है? What is this? न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट सर, AI/ML न्यूरल, मॉडल ट्रेनिंग में यूज होता है सर। एग्जैक्टली, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो मतलब एक क्या है कि एक तरह का यूनिट दिया गया है एआई टास्क को हैंडल करने के लिए। ओके, देयर इज अ स्पेशलाइज्ड यूनिट कॉल्ड एज न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट व्हिच इज कमिंग इन द अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर, और which is used to handle the AI task। ठीक है, एआई वाला टास्क कुछ भी कर रहे हैं ना, तो उसको एनपीयू को असाइन कर दिया जाता है। when you are running any AI application, you are doing model training, you are running any anything related to AI. So that particular task or that particular program will be assigned to the NPU, and NPU will handle that task. Okay, your processor will not handle, NPU will handle. Okay, but suppose you don't have a NPU processor, like means suppose हमारे processor में NPU नहीं है, तो क्या होगा? फिर भी एआई टास्क तो कर ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, then also we can run the AI task, but that will be not that much efficient, उतना ज्यादा efficient नहीं होगा ना जितना एनपीयू वाले में हो। ठीक है, Yes, sir. बिकॉज आप ऐसा समझिए कि एआई टास्क को करने के लिए अलग से एक यूनिटी बना दिया गया है ना, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा बैटरी भी अच्छा रहता है, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। why I'm saying all of you that you can say like for doing AI task, है ना, we are having a separate unit called as NPU. That's why performance along with battery life is better in ultra series. Okay, but in normal core families like the i3, i7, i5, i9, whatever, we can do all the tasks, we can do easily without any problem, but it is not that much efficient, no, as per ultra series, like that is the concept here. Okay, yeah, so that is the thing. Then we have in the Ryzen also same families concept, like Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, just like in the Intel में भी यही होता है, i3, i5, i7, i9, है ना। in the Ryzen also we have Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7, Ryzen 9, simple, ये सारा families। ठीक है, in the Snapdragon, we have the Snapdragon 7C, 8C. So 7C and 8C are for the budget segment. Okay, budget. But X Plus and X Elite are for the expensive ones, premium segment. Okay, these are coming in the premium devices. X Elite, X Plus, almost more than 60 to 70K thousand laptops. Okay, that's what. Apple, they are coming with their M chips. Apple simple categorization है यहाँ पे, simple इसका M1, M2, M3, है ना, M4 नहीं, right now which one is the latest all of you? Apple में अभी latest क्या चल रहा है? In the Apple, which one is the latest chip of which is the latest M chip? 3 सर, 3? M3। No, not M3. M5, ठीक है? M5 is going on latest. M5 आ चुका है मार्केट में। ओके, अभी उतना नहीं मिलेगा, like miss some of the store you will get the M5 laptop, in some of the store you will not get M5 laptop, but M5 launch हो चुका है। Okay, it is like means you can get अभी ये बन चुका है, निकल चुका है। ठीक है, तो M5 is the latest as of for MacBook. Okay, obviously it is more very much costly na, if you suppose you expend more than 1.5 lakh, then you can get like then you can get M5. or in the M5, in the M chip, they are having simple series Pro, Max, Ultra, like M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, M1, M2 Pro, M2 Max, M2 Ultra, M3 Pro, M3 Max, M3 Ultra, like this. So Ultra series is the most performance focused. Okay, Max is medium and Pro is like what's the lowest one. Okay, that is the thing. ठीक है, so let's talk about the Intel and the Ryzen family. ठीक, सी यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्नैपड्रैगन तो लाइक इसके दे आर न्यू ओनली राइट नाउ, है ना। तो इसमें भी अलग अलग कैटेगराइजेशन है। अब इसमें क्या होता है कि लाइक वी से विच वन इज बेटर, कौन सा अच्छा है ना, इंटेल अच्छा है कि एएमडी अच्छा है? बताइए एवरीवन, विच वन इज बेटर, इंटेल इंटेल और सर। एएमडी? मोस्टली इंटेल सर, लाइक गेमिंग नहीं करना है तो हम लोग के लिए इंटेल ज़्यादा में अच्छा एआई फीचर है इंटेल में, एएमडी में नहीं है। ओके, है। ठीक है, बैटरी लाइफ भी अच्छा है इंटेल में। हाँ ठीक है।
ओके, सो दैट इज व्हाट लाइक ओपिनियन सबका अलग अलग होगा, है ना? कोई बोलेंगे कि इंटेल, हाँ कोई बोलेंगे इंटेल अच्छा है, कोई कहेंगे एएमडी अच्छा है। बट एक्चुअल में क्या होता है, देखिए मार्केट में जो अभी जो जैसे सुनने को मिलता है, दिस इज नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, दिस इज लाइक आई एम जस्ट सेइंग ऑल ओवर, है ना? एएमडी प्रोसेसर दे आर कंसिडर्ड फॉर गेमिंग। एएमडी का जो प्रोसेसर होता है ना, ज्यादातर जो गेमर होते हैं वो एएमडी को चूज करते हैं गेमिंग के लिए, ठीक है, वैसा देखा गया है। इंटेल प्रोसेसर दे आर मोस्टली, इफ सपोज यू आर प्रोफेशनल यूजर, आपको गेमिंग भी करना है प्लस साथ में नॉर्मल वाली चीजें, नॉर्मल काम भी करना है, ठीक है, गेमिंग, मल्टीटास्किंग, ऑल टाइप ऑफ वर्क, हर हर तरह का वर्क करना है, हर तरह का काम करना है, तो उसके लिए इंटेल बेस्ट है ना? ऑप्टिमाइजेशन इसमें अच्छा होता है। बट एएमडी दे आर मेनली फोकस्ड फॉर गेमिंग, ठीक है, ज्यादातर गेमिंग वाले टास्क को इजिली अच्छे से करता है ये। Okay, that is what it is set in the market. Like if suppose you want to do all type, if you want to run all type of applications, all type of tasks you want to do, then they mostly go with the Intel processor. Or if suppose you want to do only gaming, you are a gamer, you are a video editor, then they prefer a AMD Ryzen. That is what. But see, totally we cannot say like Intel is very poor for gaming or like was Ryzen is very good for, no, this is totally wrong. Because we have to see the specification. Because Intel में भी अलग अलग टाइप के प्रोसेसर आते हैं जो गेमिंग के लिए नहीं है और कुछ कुछ गेमिंग के लिए है। AMD में भी ऐसा है कि कुछ कुछ गेमिंग के लिए नहीं है, कुछ कुछ गेमिंग के लिए है। Like this, what I'm saying, no, that some of the processor they are very high performance in the Ryzen series also, or some of the processor they are very high performance in the Intel also. ओके, दोनों में हाई परफॉर्मेंस लो परफॉर्मेंस वाले प्रोसेसर आते हैं, ठीक है। इन इंटेल इन द राइजन वी हैव बोथ टाइप ऑफ प्रोसेसर, हाई परफॉर्मेंस and लो परफॉर्मेंस ones. Okay, so that we have to identify that which one is the high performance processor, which one is the low performance processor, and how do we identify this, मतलब कैसे पता चलता है कि इंटेल में, इंटेल का कोई भी प्रोसेसर है, आप कैसे पता कर सकते हैं कि लाइक मिसकी ये इसमें पावर परफॉर्मेंस अच्छा होगा कि खराब होगा, है ना? फिर हाउ यू इसमें कैन दो आइडेंटिफाई? आता है मसले सर, एक यू सीरीज है, एक एच सीरीज। यू सीरीज एग्जैक्टली। एफिशिएंट होता है, फिर एच सीरीज परफॉर्मेंस के लिए। हाँ, वेरी गुड, एग्जैक्टली, सीरीज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। सी, सो इन द इसमें सर हम इंटेल, टास्क मैनेजर के अंदर जाके भी कर सकते हैं चेक की परफॉर्मेंस क्या है उसकी लैपटॉप टास्क की। मैनेजर में, ठीक है, यस बट सर। टास्क मैनेजर में क्या क्या चेक करेंगे हम लोग? व्हाट वी विल चेक इन द टास्क नहीं मैनेजर टू चेक द परफॉर्मेंस? सर, यस सर कि कौन से उसका लैपटॉप है मतलब प्रोसेसर का। हाँ, प्रोसेसर चेक करेंगे ना, हम लोग क्या कर रहे हैं कि यस प्रोसेसर सर। को ही चेक कर रहे हैं कि क्या प्रोसेसर है ना? तो वही मैं आपको बता रहा हूँ यस कि सर। प्रोसेसर में, मतलब प्रोसेसर का नाम लिखा हुआ है ना, मतलब लेट्स सपोज इफ इट इज रिटन लाइक दिस, अगर कोई भी प्रोसेसर ऐसा लिखा हुआ है कि इट इज रिटन एज i5, है ना, लेट्स से ऐसा i5 13 जनरेशन, है ना, 1335, लेट्स से 1335U, ऐसा कुछ लिखा हुआ है एक प्रोसेसर। तो लेट्स से हम लोगों ने टास्क मैनेजर ओपन किया, लेट्स से वी हैव ओपन द टास्क मैनेजर एंड वी सॉ द नेम लाइक दिस। तो इसमें कैसे पता चलेगा कि लाइक वेदर इट इज अ हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर और वेदर इट इज अ लो परफॉर्मेंस, कैसे देखेंगे इसमें, है ना? नाम देख के कैसे पता कर सकते हैं, लाइक सिंपल, सर यू सीरीज लास्ट में यू है। यू है, एग्जैक्टली। तो इसमें सीरीज देख के पता करते हैं, है ना, वी चेक द सीरीज एंड बेस्ड ऑन द सीरीज ओनली वी कैन आइडेंटिफाई दैट वेदर इट इज अ हाई परफॉर्मिंग प्रोसेसर और वेदर इट इज अ लो परफॉर्मिंग प्रोसेसर। सीरीज, तो सीरीज यहाँ पे क्या है, ये वाला सीरीज है, लास्ट में जो अल्फाबेट होता है हर एक प्रोसेसर का, in a processor the alphabet which is in the last, this represents the series of the processor, ये सीरीज बताता है ये चीज, ठीक है। एंड यही होता है परफॉर्मेंस फैक्टर, दिस इज योर परफॉर्मेंस फैक्टर, by this only you can identify whether it is a very high performance processor or whether it is a very low performance processor। अब यहाँ पे अलग अलग सीरीज आता है, सी क्या क्या सीरीज है यहाँ पे, सीरीज लाइक सबसे पहले होता है यू, ओके, द फर्स्ट वन इज द यू, then we have P, then we have H, है ना, HS is there, then we have H, then we have HX, these are the series, U हो गया, P हो गया, H हो गया, है ना, like U is for under performance, very low performance, U series processor they are coming for low end task, low end task in the sense normal web browsing we have to do, we have to run MS Office applications, watch videos, okay, do file transfer, like if you want to do all of these kind of normal activities then U series processor they are sufficient,
But if suppose you want to do gaming or you want to do video editing, like this kind of heavy end task, then U series processor it cannot handle those all the tasks. U series वाले processor में gaming नहीं कर पाएंगे, है ना? You cannot do gaming. Normal game we can run, normal low end games we can run, but heavy end game we cannot run. Heavy end video editing we cannot run. Rendering we cannot do, है ना? That is the thing. So U series processor are for the normal task, normal professional. These are coming in the professional, like means corporate laptops. Like suppose in the corporate mostly we work on the MS Office or like what, the browser only na. So U series processor can handle those all the tasks easily. But if you want to do gaming, that is not possible in U series. पॉसिबल है बट लो एंड वाला, कोई हेवी गेम रन नहीं कर सकते, ठीक है? दैट इज। तो गेमिंग के लिए क्या है, फिर गेमिंग के लिए एच सीरीज वाले हैं। For gaming, video editing, this kind of task, we have H series processor. H. So HS high standard, H means high performance, and HX means high extreme performance. Okay, so this one is the very powerful processor. Whenever you see HX in last of a processor, last में processor के लिखा हुआ HX, तो वो समझिए कि बहुत ही पावरफुल है। अब वो Ryzen का हो चाहे Intel का हो, okay, whether it is an Intel processor, whether it is a Ryzen processor, if you see HX in the last of the name of the processor, that means it is a very powerful processor. It can handle every game easily. Like means what we can say, right? So HS is very high performance, U series is very low performance. But what is the benefit of U series? It is having low performance, but it can provide very good battery life, है ना? But in the HX series, performance is very high, but very low battery life. Like means you can say HX series processor provide the battery, like your laptop can run up to 2 to 3 hours maximum, okay, in one charge cycle. HX series वाले प्रोसेसर में उतना अच्छा बैटरी लाइफ नहीं मिलता है, okay, but in U series वाले whichever U series processor are there, no, there be good battery life, or almost 4 to 5 hours of battery life you can expect, okay, in a U series processor. So U series good battery life but low performance. In H series high performance but low battery life, Anna, it is like you can see how I have written in the increasing order. U series lowest performance, P series medium performance, HS like means good average performance, okay, H high performance, and HX very high performance, extreme performance. That is the thing. तो यहाँ पे जो आपका alphabet लिखा है ना last में, here the alphabet what you can see, this is representing the series, and it is written as U series. That means it is not a very powerful processor, है ना? It can be used to do some basic tasks, okay, but it cannot be used to do gaming, है ना? But for an example, here it is written H like this. Now it is a very powerful processor, very you can say like it can handle heavy and task easily, है ना? That is the concept here. So by seeing the series only we can identify, मतलब ऐसे पता करते हैं, चाहे वो इंटेल का हो या राइजन का प्रोसेसर हो, ऐसे पता कर लेंगे कि कौन सा प्रोसेसर है, वो हाई परफॉर्मेंस वाला है या लो परफॉर्मेंस वाला है, ठीक है? इसीलिए मैंने आपको बोला कि जो इंटेल होता है या राइजन का प्रोसेसर होता है, उसमें ऐसा नहीं कि इंटेल वाला बहुत ही पुअर प्रोसेसर है, राइजन वाला बहुत ही पावरफुल है, वैसा नहीं होता है। सीरीज देखना पड़ता है, ठीक है, ऑलवेज, है ना? What I am saying all of you that we don't it is totally incorrect, right, that we can decide by seeing the name of the processor only that whether it is Intel or whether it is Ryzen. No, we have to check the series. By checking the series only, you can take the decision that whether it is a high performing processor or whether it is a low performing processor. So first thing we check in the processor, that is your series only, है ना? इसके बाद और भी कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ द मोर कॉन्सेप्ट वी हैव लाइक जनरेशन कॉन्सेप्ट, राइट? प्रोसेसर में जनरेशन का भी कॉन्सेप्ट होता है ना, इन द जनरेशन, इंटेल में, not in Ryzen, okay? So in the Intel processor we have the generations, right? अच्छा, tell me like which one is the latest generation all of you? अभी latest Intel का कौन सा generation चल रहा है? 13 जेन से 13? 13 सर इंटेल 13 जनरेशन नहीं 14 चल रहा है अभी, ठीक है? 14 is the latest, 14 आ चुका है अभी, okay? हाँ, so in the Intel 14th generation is the latest generation as of now. अभी के टाइम पे 14 generation अभी latest है, ठीक है? देखिए अभी अगर लैपटॉप या कोई पीसी परचेस या कोई प्रोसेसर परचेस करने जाइएगा, सपोज यू आर गोइंग टू परचेस अ लैपटॉप और अ प्रोसेसर स्पेशली, you can get 13 generation processor also, you will get 12 generation processor also, you will get 14 generation also. But 14 generations are processor, they are costly as of now, little bit expensive they are, because they are newly launched, है ना? 13 generation you can get easily,
12th generation also you can get, and 12th generation वाला तो अभी और भी कम दाम में मिल जाएगा, like means you can get it in a very cheap price, 12th generation processor. But it is said it is not at all recommended to purchase a like means lower generation lower generation processor. Don't purchase, always go with the higher generation or the latest generation, like 13th generation. It is okay to go with the 13th generation as of now, but obviously like 14th generation is now, so always we try to go with the latest generation processor. Why, all of you? Because always the latest generation processor, they are very much compatible with the latest software and the technology and all the security features. Okay, that's why latest generation processor, generation also matters. Okay, generation भी matter करता है. That is it. Now generation, by seeing the generation, you cannot say it is a very performance. Like performance factor, I just told you, that is a series only. Okay, generation is like something you can say it is the latest type of processor, latest. Okay, so in the generation we have like nowadays we have 12th generation, 13th generation. Okay, and 14th. 14 is the latest one. 14th generation is the latest. लेटेस्ट वन, ठीक है. और भी कुछ चीजें होती है, लाइक व्हाट एल्स एवरीवन, एक प्रोसेसर के अंदर और क्या होता है, इसके और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं. जैसे अब लेट्स सपोज आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं, लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू परचेज अ व्हीकल, चेक करते हैं ना उसमें कितने सीसी का है उसका इंजन है ना, उसका पावर कितना है, उसका माइलेज कितना है, उसका टॉर्क कितना है, ये सारी चीजें चेक करते हैं ना. सो इन अ प्रोसेसर ऑल्सो वी हैव दिस थिंग्स, प्रोसेसर में भी होता है ये सारा. ठीक है, और क्या चीजें चेक करते हैं बताइए. व्हाट डज वी चेक इन अ प्रोसेसर, एक्सेप्ट सीरीज एंड जनरेशन. जनरेशन सर. हाँ, generation I have mentioned here. Generation we have mentioned. Except generation or series. सर ग्राफिक कार्ड्स. No, ग्राफिक्स कार्ड तो अलग हो गया ना. प्रोसेसर में क्या चेक करते हैं वो पूछ रहे. प्रोसेसर के अंदर, प्रोसेसर को आपको चेक करना है ना, तो मतलब क्या क्या चीजें चेक कोर्स करते सर, कोर चेक करते हैं. हो. और एग्जैक्टली कोर्स, और नंबर ऑफ थ्रेड कोर्स. सर. हाँ, कोर्स, ठीक है. हाँ, थ्रेड भी है, कोर एंड थ्रेड टुगेदर, है ना. एंड व्हाट एल्स. स्पीड चेक करते हैं ना, स्पीड. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द प्रोसेसर, राइट, बिकॉज क्लॉक स्पीड्स स्पीड मैटर, सर. है ना. उसका, हाँ, उसका क्लॉक स्पीड और यू कैन से द स्पीड, उसका प्रोसेसिंग स्पीड कितना है. जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना फास्ट परफॉर्म करेगा ना प्रोसेसर, है ना. as much higher speed you have, that much your processor can process the instructions, right. Speed we check, and last we check family in the sense, all of you, i3, i5, ryzen 3, ryzen 5, ryzen 7, ryzen 9, right, है ना, right. So usually what happens, like when you will go to purchase a processor, or especially in some of the devices, some of the shops, like in the offline especially. So what the people they actually do, they only check the i5, i7, it is whether it is a ryzen 7, ryzen 9, they only check this thing, right. यही चीज हम लोग देखते हैं ओवरऑल, राइट, कि i5 है कि i7 है क्या है ना. उसी बेसिस पे डिसाइड कर लिया जाता है कि अच्छा है ये खराब है, बट एक्चुअल में दिस इज रॉन्ग, है ना. दिस इज रॉन्ग दैट you can decide a capacity or capability of a processor by checking the family only. This is wrong. Why? Because in some of the cases, lower family processor can also provide very good performance than a higher family. Why I'm saying like this, all of you? Let's say, let us take an example of two different processor. Let's say AC को लेते हैं. Let's say it is a U series processor. Okay. And on the other hand, we have a i5. Same i5 is there. Okay. It is 12th generation. And it is 12420H. Same processor, i5, both are i5. Okay, see, this is also i5. Okay, this is also i5, this is also i5. But now tell me, all of you, that in which processor you will get better performance. सेकंड वाला. Second one. Why? मोस्टली फर्स्ट वाला सर, First जो wala. नया Okay. जनरेशन का है. Okay. सेकंड सर. सर Second. सेकंड वाला हाई स्पीड देगा, क्योंकि सर उसका जो जनरेशन है उस मैटर नहीं करता है, पर जो उसका सीरीज है सीरीज वो का मैटर करता है. सर. एग्जैक्टली. हाँ, वही चीज मैंने अभी बोला कि सीरीज मैटर करता है परफॉर्मेंस के लिए, जब भी हम लोग चेक करते हैं तो, है ना. जनरेशन उतना मैटर नहीं कर रहा है परफॉर्मेंस के हिसाब से, बट सीरीज ज्यादा मैटर कर रहा है ना. लाइक सीरीज ऑलवेज मैटर इन टर्म्स यस ऑफ सर. परफॉर्मेंस, बिकॉज इट इज एच सीरीज, है ना. इवन इट इज लाइक
lower generation processor. It is a 12 generation processor, and it is a 13 generation processor. That means it is the latest one. But even it is later generation, it will not provide that much performance because it is U series processor. And U series, we all know it is U means under performance, right? And H means high performance. So here you will get better performance than this processor, this one. Even it is a higher generation, ठीक है? ये हायर जनरेशन है, फिर भी क्या होगा, यहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा, वही चीज होता है, ठीक है? सो दैट इज योर कॉन्सेप्ट. सो ऑलवेज सीरीज मैटर, ठीक है? वी कैन नॉट डायरेक्टली से दैट इट इज हायर जनरेशन तो इट विल प्रोवाइड वेरी गुड परफॉर्मेंस. नो, series matters. That is the thing. Okay, that's why I was saying that always checking the family is not correct. Checking the series also we have to see. So being a technical person, we check so many things, ना, so many things. Series इसके अलावा भी और भी चीजें होती है, अलग अलग स्कोर होता है ना? Multi-core score, single core score, so many things are there. So you can check so many things, but these are the most common things. Okay, that is the thing. Yes, sir. Cores, हाँ, what are cores, all of you? Yes, sir. See, है ना? हाँ, देखिए कोर्स क्या होता है, कोई बता सकते हैं व्हाट आर कोर्स? सर वही ना i3 i5। नहीं डेट नहीं, डुअल कोर। अच्छा हाँ, डुअल कोर, 12 कोर प्रोसेसर जो मतलब हाँ जैसे सर कोर प्रोसेसर तो बोला जाता है ना सर कि इतना कोर प्रोसेसर है, हाँ. बट एक्चुअल मीनिंग तो नहीं पता है सर उसका। ओके, देखिए एक जो प्रोसेसर होता है ना, उस पार्टीशन होता है सर, सीपीयू का पार्टीशन का, पार्टीशन। सीपीयू पार्टीशन, एग्जैक्टली. एक प्रोसेसर होता है, उसको मल्टीपल कोर से बनाया जाता है. लाइक मींस वन सिंगल प्रोसेसर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कोर्स. एक प्रोसेसर में एक से ज्यादा कोर हो सकता है. ओके, लाइक 2 कोर्स, 4 कोर्स, 6 कोर्स, 10 कोर्स, 12 कोर्स, 16 कोर्स, लाइक दिस. एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ कोर्स यू हैव, नो दैट मच ऑफ बेटर परफॉर्मेंस यू कैन गेट. जितना ज्यादा कोर होता है उतना अच्छा मल्टीटास्किंग होता है प्रोसेसर का. ओके, एज मेनी नंबर ऑफ कोर्स, so that better multitasking you can expect in your processor. Okay, so Yes, cores sir. also matter. And what are core basically? Cores are basically, you can say, one core behaves like one CPU. एक कोर जो होता है ना, मतलब एक प्रोसेसर एक प्रोसेस को हैंडल कर सकता है. वन कोर कैन हैंडल अ बिग प्रोसेस, है ना? लाइक सी, इसमें चेक करते हैं. लेट्स गो टू द टास्क मैनेजर एंड हियर वी चेक द कोर्स एंड थ्रेड्स एंड ऑल दिस थिंग्स. Let me open the task manager. See, we are on the task manager, and if I go to performance, and if I go to CPU here, so you can check the name of the processor actually, and here you can see the number of cores. है ना? यहाँ पे आपको number of cores दिख जाएगा. How many cores I'm having it here, all of you? 10 cores. ठीक है, 10 core दिख रहा है यहाँ पे. How? What is the meaning of this? So basically, our processor. If suppose I'm having this processor, ये single एक processor है. So it is divided into 10 parts. You can say 10 parts. ठीक है, 10 part है यहाँ पे. 1, 2, 3. Okay. How much? 9, and let's say one more. 10. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज कोर्स. ठीक है, ये सिंगल कोर है. तो ये मेरा एक पूरा पूरा प्रोसेसर है. दिस इज माय प्रोसेसर. एंड वन कोर, 2 कोर, 3 कोर, 5 कोर, 6 कोर, 7 कोर, 8 कोर, 9 कोर, टोटल 10 कोर्स. एंड वन कोर कैन हैंडल वन ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन. लाइक मीन्स की लेट्स सपोज वी आर डूइंग गेमिंग. ठीक है, कोई गेम खेल रहे हैं. Let's suppose we are playing a game. So game will be assigned to one of the core. Then let's say we are running the browser run कर रहे हैं साथ ही में. तो ये ब्राउजर जो रन कर रहे हैं, ये दूसरे वाले कोर को असाइन हो जाएगा. सो दूसरा जो कोर होगा वो ब्राउजर को हैंडल कर रहा है. पहला वाला कोर किसको हैंडल कर रहा है? गेम को हैंडल कर रहा है. ठीक है, वन कोर इज हैंडलिंग माई गेम एंड द अदर कोर इज हैंडलिंग माई ब्राउजर. ठीक है, ऐसे होता है. Okay, every course they work together, they handle single operations, right? That is the concept. So that is said that as many number of core you have na, that much better multitasking you can do in your laptop or your PC. ठीक है. थ्रेड्स क्या होता है? थ्रेड्स इज बेसिकली कोर का भी एक छोटा यूनिट होता है. कोर को भी डिवाइड किया जाता है थ्रेड में. सो सिंगल कोर इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल थ्रेड्स. ठीक है, थ्रेड दो तरह का होता है एवरीवन यहाँ पे. एक कोर को जो डिवाइड करते हैं उसको भी थ्रेड कहते हैं, और एक प्रोसेस को डिवाइड करते हैं उसको भी थ्रेड कहते हैं. ओके, थ्रेड्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स इन अ सीपीयू, or sorry, in a computer. When we divide a core into multiple parts, those are also called as threads. But when we divide a process, so those are also called as threads. Process means, all of you, process क्या होता है? Processes are the applications. ठीक है, processes like means, see, these are all the processes.
तो मेरे कंप्यूटर पे, इन माय लैपटॉप, इन माय कंप्यूटर, लाइक हाउ मेनी एप्लीकेशंस आई एम यूजिंग, हाउ मेनी सर्विसेज, हाउ मेनी प्रोसेसेस, सो दीज आर कॉल्ड एज प्रोसेसेस। ठीक है। तो when a single process is divided into multiple small processes, so those small processes are called as threads। मतलब मान लेते हैं कि लेट्स से क्रोम ब्राउजर है, तो इन द क्रोम ब्राउजर आई एम रनिंग टोटल हाउ मेनी टैब्स, लेट्स से आई एम रनिंग 4 to 5 टैब्स, 4 या 5 टैब रन कर रहे हैं ब्राउजर के अंदर। तो ब्राउजर क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, उसके अंदर जितने टैब रन कर रहे हैं ना, तो वो थ्रेड हो गए। ठीक है। तो थ्रेड क्या होता है, एक प्रोसेस का छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, एक छोटा सा प्रोसेस है थ्रेड। ठीक है। ओके सर। यस सर। तो याद रखिएगा। ठीक है। हाँ। तो यहाँ पे जो आपको थ्रेड दिख रहा है ना, ये प्रोसेसेस वाला थ्रेड है। अब ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोर को 10 कोर है, 10 को हम लोगों ने 8000। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। इज इट ऑडिबल एवरीवन? यस सर। यस। यस सर। ओके। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ बताइए। सर वो जो स्क्रीन है ना सर, एक चीज पूछना था, जैसे प्रोसेस में आप क्लिक करेंगे क्या एक बार सर? तो प्रोसेस। ओके। हाँ सर, प्रोसेसेस में सर अगर मान लीजिए हमारा इतना है ना सर, इतना एप्लीकेशन खुला हुआ, सर सपोज हम्म। अगर हम लोग सब कुछ एक मतलब सब कुछ क्लोज कर देते हैं यहाँ से जा करके एंड टास्क कर देते हैं, फिर भी हम्म। सर परफॉर्मेंस में आने के बाद हम्म। अ, सर एक बार परफॉर्मेंस वाले पे, हाँ। सर फिर भी परफॉर्मेंस में आने के बाद सर फिर भी हमारा जो सीपीयू है वो कुछ ना कुछ लेते रहता है, पर ऐसा क्यों सर? मतलब क्योंकि हाँ कि बैक। हाँ। आप बताइए। सर बैक में मतलब ठीक है सर, कुछ हद तक ले तो चलता है, बट सर वो फिर भी जीबी में लेता है, तो वो समझ में नहीं आता है सर, वो ऐसा क्यों? जीबी। हाँ सर, सर वो मेरा ओएस मेरे रहता है लैपटॉप ना, में सर ओएस मैंने तुम्हारा देखा है जितना सर। जीबी का उतना स्टोरेज तो लेगा ही भाई ना। भाई एक सेकंड, भाई एक सेकंड रुको ना, पूछने दो ना। देखिए, हाँ, जीबी जो होता है वो मेमोरी में होता है, ये प्रोसेसर में आपको परसेंटेज दिखेगा। ठीक हाँ है, हाँ सॉरी सर, परसेंटेज। वही सर हाँ, परसेंटेज, हाँ सर परसेंटेज में सर मेरा अगर सब कुछ बंद कर देते हैं फिर भी सर 40% या 30-40% लिया रहता है। थर्टी 8 जीबी परसेंट का रैम सर। तब आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ सर। ये जो आपका ये जो है ना प्रोसेसर, ये रनिंग प्रोसेसर, रनिंग मतलब अभी करंटली मैंने सर जो सब बंद एप्लीकेशन। करने के बाद बता रहे सर। हाँ हाँ ठीक है, दैट इज आई नो आप क्या कह रहे हैं। बट ये जो है ना कि मतलब रनिंग में जो रन कर रहा है वो मेरा जितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है वो तो दिख ही रहा है, बट सब बंद भी कर देते तब भी क्या होता है कि 30-40% अगर आपको दिख रहा है तो आपके बैकग्राउंड में बहुत सारा प्रोसेस रन कर रहा है। यहाँ पे आपको बैकग्राउंड प्रोसेस दिख रहा होगा 100। बैकग्राउंड में क्या हो रहा है कि कोई कोई ऐसा टास्क है, जैसे ये बिक्सबी का कोई ऐसा बिक्सबी रन कर रहा है 0.3 सर मेरा 0.8 इतना प्रोसेसर कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पे आपको सीपीयू का सेक्शन दिख रहा होगा सी। तो इतने सारे जो हाँ प्रोसेसेस सर। है ना, ये इतना मेरा सीपीयू मेरा जो है ना वो तो कंज्यूम कर रहे हैं, तो अगर आपको इसको एंड करना पड़ेगा, इसको एंड कीजिए तो उतना प्रोसेसर जितना कंज्यूम हो रहा होगा ना वो फ्री हो जाएगा थोड़ा। फिर इसमें आपको वही चेक करना है कि कौन कौन सा ऐसा बैकग्राउंड का प्रोसेस है जो आप इसको एंड कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कुछ कुछ है, जैसे ये मोबाइल डिवाइसेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एंड कर सकते हैं। वैसे फिलहाल तो मेरे डिवाइस में उतना प्रोसेसर यूज हो नहीं रहा है सी, मेरे डिवाइस में बहुत ही कम हो रहा है। मेरे में कितना है सी, 18%, बहुत ही कम है, बहुत नॉर्मल है ना, 10%, 9% बहुत ही कम है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ, आप क्या कीजिएगा, प्रोसेसर में जाइएगा या बैकग्राउंड प्रोसेस में चेक कीजिए कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है ना जो ज्यादा मतलब सीपीयू कंज्यूम कर रहा है। आपने कोई ऐसा थर्ड पार्टी या कोई ऐसा अनट्रस्टेड एप्लीकेशन डाउनलोड किया होगा ना, तो वो क्या करता है बैकग्राउंड में बहुत बहुत ज्यादा मतलब आपका प्रोसेसर कंज्यूम करेगा। ऐसा दिख ऐसा दिख जाएगा कि मान लीजिए कि ये कोई एक ऐसा प्रोसेस दिखेगा जो आपका 10% या 20% ऐसा सीपीयू कंज्यूम कर रहा होगा, ऐसा कोई प्रोसेस दिखता है ना, तो उसको पहले एंड टास्क कर दीजिए, पहले बंद कीजिए उसको। ठीक है। हाँ, तो वो चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा सी कौन सा प्रोसेस है वो कितना सीपीयू कंज्यूम कर रहा है। ओके। तो वही चीज आपको बंद कर लेना है। जैसे व्हाट्सएप वगैरह होता है जो अभी अभी के टाइम पे ज्यादा जरूरत नहीं है, जैसे ये कुछ क्विक सर्च वाला है, ऐसे ऐसे एंड टास्क कर सकते हैं आप। ठीक है, तो वही चेक कीजिएगा, है ना, एंड टास्क कर दीजिए उसको। ठीक है। सर मैं 5 एक्सप्लोर को ऑन टेक्स्ट कर दिया था, एन टेक्स्ट कर दिया था, पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। नहीं, फाइल मैनेजर को मत कीजिएगा, उसके अंदर आपका एसएसडी रहता है ना, मत सॉरी, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ना आपका। और एक बार फाइल जाके किया, और एक बार हाँ। जाके किया आ गया।
नहीं नहीं, फाइल मैनेजर को मत कीजिएगा। फाइल मैनेजर जो विंडोज एक्सप्लोरर होता है उसके अंदर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, विंडोज रहता है। उसको एंटर कर देंगे तो पूरा बंद हो जाएगा ना, इसीलिए फिर वो दोबारा से ओपन होता है वो, इसीलिए आपका आ गया। ठीक है, तो उसको नहीं करना है, मतलब जो जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे VMware वगैरह यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका एंटर्स कर सकते हैं। वेब भी मैनेजर है, कुछ यूज हो रहा है तो ना, तो इसको एंटर्स करना पड़ता है। ठीक है, वैसा चेक कीजिएगा। मेरे में तो फिलहाल लाइक मैं सीट इज वेरी नॉर्मल, इतना तो नॉर्मल है ना, 12%। यस ये सर। क्या होता है कि 100% तक भी जाता है। अगर 100% अगर आपको दिख रहा है ना, तो आपका सिस्टम बहुत ज्यादा लैग करेगा, बहुत लैग करेगा, फंस फंस बच के चलेगा, कुछ भी ओपन करेंगे ओपन नहीं कि, होगा, बहुत देर ओपन होगा। राइट। कितना कितना तक होना चाहिए यूटिलाइजेशन? 50% है तो चलेगा, आपका 50% तक है तो नॉर्मल है। ठीक है। ओके सर। हाँ, थोड़ा सा लो लो एंड का प्रोसेसर होता है ना, देखिए प्रोसेसर पे भी डिपेंड करता है कि आपका प्रोसेसर कितना पावरफुल है। थोड़ा सा लो एंड का प्रोसेसर होगा, जैसे i3 वगैरह होता है ना, आई थ्री हो गया या Ryzen 3 हो गया, तो उसमें क्या होता है कि आपको 40-50% आपको नॉर्मली दिखेगा, नॉर्मली 40-50%। ठीक है, उनका कैपेसिटी कम होता है ना। अब अगर आपके प्रोसेसर में कोर भी कम है, ज्यादा कोर नहीं है, देखिए मेरे प्रोसेसर में कितना कोर है, लेट्स से यहाँ पे 10 कोर है, टोटल 10 कोर्स है। बट अगर लेट्स से किसी के प्रोसेसर में दो ही कोर है, 2 कोर्स या 3 कोर है, ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा यूटिलाइजेशन ज्यादा ही दिखेगा। ठीक है, 40%, 50% ऐसा दिख सकता है, 60%, 80% तक भी दिखता है थोड़े कमजोर वाले प्रोसेसर में। ठीक है, जिसमें कोर्स भी कम है, थ्रेड्स भी कम है, वैसे वाले में। ठीक है, प्रोसेसर थोड़ा हाई एंड का होगा तो उसमें आपका यूटिलाइजेशन नॉर्मल दिख जाएगा। ठीक है, नॉर्मल मतलब 30-40% नॉर्मल है। ठीक है, वैसा। ओके सर। हाँ, ठीक है, सो दैट इज व्हाट कोर्स ऑल ऑफ यू, है ना, वो चीज है। स्पीड यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यू कैन सी द स्पीड ऑफ अ प्रोसेसर हियर इट इज मेंशन्ड, राइट। सी, like speed is measured in the gigahertz only, you can see the base speed यहाँ पे। आपको exact speed नहीं दिखेगा, base speed of a processor is coming in the gigahertz, like it is coming in the ranges में होता है, like suppose for 2 gigahertz to 5 gigahertz like this। एक प्रोसेसर का जो स्पीड होता है गीगाहर्ट्ज में मेजर करते हैं, और ये रेंज रेंज में होता है, कोई एक ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं होता है, रेंज में होता है। ठीक है, रेंज में मतलब कैसे हो सकता है, नॉर्मल जैसे 2 गीगाहर्ट्ज से लेकर 5 गीगाहर्ट्ज वाला एक प्रोसेसर है, और ये बेस स्पीड है। बेस स्पीड इन द सेंस लाइक मींस मिनिमम हाउ मच ऑफ स्पीड यू कैन गेट इन योर प्रोसेसर, मिनिमम how much speed, okay, like means 1.40 gigahertz I can get minimum speed in my processor, है ना, that is the thing। maximum I can get up to 5 gigahertz, right, that is the concept here। so that यस thing you सर। can check ना, अभी कितना स्पीड मिल रहा है मेरे प्रोसेसर में, यू कैन सी द करंट स्पीड अभी कितना मिल रहा है, 2.86, 2.4, 2.3 गीगाहर्ट्ज, है ना, दिस इज द नॉर्मल। अब यहाँ पे कोई गेम रन कर लेंगे ना, कोई गेम अगर खेलने लगेंगे यहाँ पे, तो स्पीड आपका बढ़ जाएगा, ये स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर 4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज ऐसा दिखेगा, क्योंकि फिर वहां पे ज्यादा प्रोसेसिंग होगा ना सिस्टम के अंदर, सीपीयू में, तो स्पीड फिर वहां बढ़ेगा। ठीक है, अभी के टाइम पे नॉर्मल एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो स्पीड नॉर्मल है। ओके, दैट इज द थिंग। सो स्पीड ओके ऑल्सो सर। मैटर्स। हाँ, ठीक है, हाँ, स्पीड मैटर्स। फैमिली क्या होता है, वही चीज मैंने बताया, i3, i5 हो गया, Ryzen 3, Ryzen 5 हो गया, ये सारे को फैमिलीज कहते हैं। ठीक है, तो ये सारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होता है एक प्रोसेसर का, टेक्निकल यस सर। स्पेक्स ऑफ सीपीयू। ठीक है, ये सारी चीजों को चेक करना पड़ता है, तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, लाइक परफॉर्मेंस वाइज, बैटरी वाइज, ये सारी चीजें। इसीलिए मैंने आपको बोला कि कोई भी है ना प्रोसेसर, लाइक विच एवर प्रोसेसर इट इज देयर, राइट, इट इज द राइजन और इट इज AMD, we don't decide it directly that AMD is good, Ryzen, Intel is good, or Intel is good and AMD, Ryzen is bad। No, we don't decide it directly, we check the specification। ठीक है, स्पेसिफिकेशन चेक करेंगे, उसके बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, कि कहीं कहीं पे क्या होगा कि इंटेल वाला प्रोसेसर अगर एच सीरीज का है तो वो ऑब्वियसली बेटर परफॉर्म करेगा। राइजन में भी तो आता है ना, राइजन में भी यू सीरीज वाले प्रोसेसर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आई हैव अ चार्ट ऑल ऑफ यू, लेट मी प्रोवाइड दैट चार्ट टू यू गाइस। एक तरह ओके का सर। डायग्राम आप समझ सकते हैं, लाइक इसमें कि इंटेल या राइजन का मीनिंग क्या होता है, अगर ऐसा प्रोसेसर आपको दिख रहा है ना तो इनका मीनिंग क्या है। वेट अ सेकंड। ठीक है, देखिए इंटेल के प्रोसेसर में अगर आपको ऐसा नंबर दिखता है i5, और यहाँ से यहाँ तक नंबर दिख रहा है 12 428, मतलब एक राइजन इंटेल का प्रोसेसर ऐसा कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, वेट अ सेकंड, i5 12 420H, ऐसा अगर नेम दिखता है तो इसके मतलब इसमें इसका मीनिंग क्या है। पहला तो ये सीरीज है, एच सीरीज में हाई परफॉर्मेंस। ये जो नंबर दिख रहा है स्टार्टिंग का, ये जनरेशन बताता है यहाँ पे, दिस इज योर जनरेशन।
It is written as 12, that means it is a 12 generation processor. It is written as 13, that means it is a 13 generation processor. तो ये पहला दो नंबर जनरेशन बताता है। लास्ट का जो 3 नंबर होता है या 2 नंबर होता है वो परफॉर्मेंस टीयर बताता है, मतलब जितना ज्यादा नंबर होगा उतना बेहतर प्रोसेसर है, उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगा। as much higher number you have as a last 2 numbers, last 3 numbers, that much better performance. Okay, like first 2 numbers always represent the generation in a Intel processor, but in Ryzen we have something different. ठीक है, Ryzen में थोड़ा different है। In the Ryzen the we have the concept of series, इनका series आता है, generation के अलावा इनका series है, like means 7000, 6000, 5000 series। ठीक है, तो द फर्स्ट नंबर ऐसे लिखा होगा ना राइजन, लेट्स से कि राइजन ऐसा इसका नेम लिखा होगा राइजन का, राइजन 5, ओके, 7540U ऐसे करके। तो एक राइजन का प्रोसेसर भी ऐसा आपको दिख जाएगा ना कहीं पे भी। तो इसका मतलब क्या है, इफ सपोज राइजन प्रोसेसर यू सी लाइक दिस, so the meaning is simple. This U means it is a U series processor, it is representing the series, okay। राइजन Yes, 5 sir. तो मतलब ऐसे पता कर सकते हैं कि राइजन 5 फैमिली वाला है, ठीक है, राइजन 5 ऐसे पता कर सकते हैं, बट ये आपको नहीं पता है, मतलब ऐसा लिखा नहीं है। तो ये जो सेकंड वाला नंबर होता है ना, ये भी आपका फैमिली बताता है, ठीक है, दिस इज योर फैमिली। अगर 5 है तो मतलब ये राइजन 5 है, अगर 7 है तो राइजन 7 है, अगर 9 है तो इफ सपोज इफ इट इज 9 देन मींस राइजन 9, इफ इट इज 3 दैट मींस इट इज राइजन 3। so this is your family, this number represents series, this is your series। सीरीज मीन्स लाइक मीन्स वो वाला सीरीज नहीं जो यू सीरीज है, सीरीज की बात कर रहे हैं उसका सीरीज वो वाला नहीं, इनका राइजन का अपना सीरीज आता है। अपना मीन्स लाइक 7000, 6000, 5000। ऑब्वियसली जितना हायर सीरीज होगा उतना बेहतर परफॉर्मेंस होगा, ठीक है, बेहतर प्रोसेसर होगा, Yes, sir. है ना। सो 7000 इट इज वेरी गुड, है ना, लाइक 6000, 5000 यू कैन से लाइक नॉर्मल, है ना, दैट इज द थिंग। सो द फर्स्ट नंबर रिप्रेजेंट द सीरीज, ठीक है। ये जो नंबर होता है ना, ये फैमिली के ठीक बाद ये वाला आर्किटेक्चर बताता है, ये आर्किटेक्चर। फोर, जितना ज्यादा नंबर होता है उतना बेहतर आर्किटेक्चर होता है प्रोसेसर का, उतना बेहतर प्रोसेसिंग स्पीड और कैलकुलेशन परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा होता है, ठीक है। तो राइजन के प्रोसेसर में आपको एक आर्किटेक्चर का भी कॉन्सेप्ट मिलेगा, आर्किटेक्चर ये वाला नंबर, ठीक है। so as much higher number you have, हाँ, as much higher architecture you have, that much better performance, ठीक है। लास्ट वाला जो होता है ये परफॉर्मेंस टीयर बोल सकते हैं या फिर इसको एसक्यू वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। ये जो होता है लाइक मींस इट इज 0, 5 लाइक दिस, है ना। नॉर्मली ये 0 दिखता है या तो 5 दिखता है। 5 इज ऑब्वियसली बेटर देन 0, 0 वाला से बेटर क्या होगा, 5 होगा। इसके जगह अगर 5 है ना, लेट्स से here it is like as instead of 0 it is 5, तो obviously 5 1 is better, जो 5 वाला होता है वो बेटर होता है, ठीक है, दैट इज द थिंग। तो ये राइजन का और इंटेल का आइडेंटिफिकेशन होता है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा प्रोसेसर को, ठीक है। इसमें ज्यादा देखिए, वैसे तो इंटरव्यू वगैरह में ये सब पूछेंगे नहीं, बस टेक्निकल नॉलेज के लिए ये सब आपको पता होना अच्छी बात है, ठीक है, दैट इज Yes, थिंग। sir. हाँ, तो एच सीरीज इसमें आप सिंपल मतलब इफ यू वांट टू, व्हाट आई एम सेइंग ना, दैट इन द इंटरव्यू दे विल बी नॉट आस्किंग यू दिस ऑल द कॉन्सेप्ट्स, राइट, फॉर टेक्निकल नॉलेज ओनली वी आर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, ओके। या सी, सो एच सीरीज, सीरीज जस्ट यू ऑल नो, है ना, सीरीज जनरेशन कॉन्सेप्ट और कोर्स थ्रेड्स, ये सारी चीजें सीपीयू का, ठीक है, दिस ऑल द थिंग्स अबाउट द सीपीयू एंड दिस थिंग इज अनफ, ठीक है। ये सारा चीज अगर आप एक प्रोसेसर के अंदर चेक कर रहे हैं तो दैट इज ओके, दैट इज अनफ सर ऑन स्क्रीनशॉट द, Okay, sir. ओके ओके ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, हाँ, सर ओके, स्टार्टिंग हाँ, पेज सर ठीक, स्टार्टिंग पेज। ठीक है, आई एम जस्ट शोइंग यू। आई थिंक वो वाला स्क्रीनशॉट हो गया ना, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ हाँ कंप्यूटर हाँ एंड वो सब हो इंटरनल, गया सर, ये नहीं Yes, sir. हो गया, ओके। देन टेक दिस, आई थिंक ये इतना विजिबल तो नहीं हो पाएगा ना, आई थिंक ये नहीं नहीं सर, थोड़ा जूम आउट। हाँ ठीक है सर, इतना में कर लेंगे। विजिबल है, ओके, हाँ सर टेक ठीक है, इट, बहुत धन्यवाद। जब पहले ओके वाला देन थोड़ा देख दीजिए। पहला वाला Done, sir. यस सर। डन, ओके। ठीक है, जिनको विजिबल नहीं है आप लोग थोड़ा जूम करके इसको ले सकते हैं, ठीक है, हम जस्ट जूमिंग इन थोड़ा सा, uh, हाँ ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, दोज हु आर, इफ इट इज नॉट विजिबल टू यू गाइस। सर क्लास हो गया क्या? सॉरी, डन सर। क्लास हो गया, क्लास कंप्लीट हाँ, सर। या क्लास इज कंप्लीटेड, सेशन इज कंप्लीटेड, ओके। ओके सर। Yeah, tomorrow we will discuss some of the more concepts on SSD and RAM and some more hardware concepts. Okay. Yeah. सर ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे ना? हाँ, ग्राफिक्स ग्राफिक्स के के बारे में बारे पढ़ेंगे। ग्राफिक्स के लिए हम लोग वो होगा डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, कल नहीं उसके बाद, ओके। में। ओके।
Okay, I think take a no this then take it from here. This much only, I think. Yeah, this much completed. I think yeah, this much. पहले वाला सर कंपोनेंट का Component wala. Okay, sit. Okay, then take this external components of a computer. डन सर Okay, then take this internal parts of a computer system. Take this. डन सर थैंक यू Then okay. All right, then, ठीक है everyone. So that's all for today. And tomorrow we'll be discussing on some more technical concept like the SSDs and the RAM. And yeah, Okay, sir. then Okay, just sir. go Thank through you. all this concept. Yeah, and then you have any doubt, any question is there, then you can ask in the tomorrow session. Okay. Yeah. Okay, All right, sir. All right then. Okay. Thank you, everyone. Thank you. See you tomorrow. Then bye, all of you. Thank you. bye bye sir. Thank you, Thank sir. you. Thank you. Thank you.